যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। Hi guys, thank you for joining the live stream. Today we have back with us Tushar and Anup from the Libertarian Party of India. Oh, we are joined by mysterious sociologist as well, who is also keen to ask a few questions of his. So hello, Professor Christoph Lieselot. Hi guys. All such people. So and we'll take the questions mainly from the super chats and the non-super chat questions as well, those which I decide to be very important. And we'll take mysterious sociologist's question as well. But first, let's start with the question that was asked on the last day's live stream by a pretty well-intentioned, well-meaning viewer of ours, frequent viewer and supporter of ours, called M. Shastri. Let's check out his question, which Tushar had decided he's going to respond to anyway from Anup's channel. Let's just start with that. He wrote an elaborate criticism. He said that these guys are very undercooked, naive, and need more experience in life, liberty, and society, need experiences with life, liberty, and society. I'm not confident that they can govern and their policies will make the general public soured with libertarian principles very, very quickly. They need to spend more time thinking about the second and third order effects and cooking their party platform. They also need to look into libertarian experiments that have been conducted in the country right after liberalization. A lot of them failed. Maharashtra used to have completely privatized and deregulated emergency services. They had quality and service delivery standard that players had to uphold. It failed pretty badly. Government had to reconstitute emergency services and recontract them. They haven't addressed a lot of issues that will arise with extreme deregulation, such as monopsony, price discovery, and price discrimination, etc. They also need to learn lawmaking and understand definitions, legal standards, and legal tests. It feels like a shallow dive of libertarianism. I would advise they take down some of the question, especially critical ones, and address them. Governance and policy is not just about going all into one principle or ideology. You need to understand trade-offs and political capital. Also, they need to avoid going for the big guns like state or general elections. Start with local municipalities. Let's see them manage a local fish market with libertarian principles. When they can sell that to the rest of the state, then country. That means you have to work on it for 30-40 years. Kashiram took 25 years and 4 elections before his Ambedkarism took over 90s and 2000s politics. So yeah, if they are willing to put in that much work, then don't waste people's time. And they aren't willing to put that much work, then don't waste people's time and effort. And I had one point to mention here was that, remember, this is sort of an apologia for the Libertarian Party here to start with. I'll start with an apologia. That this the last one, as is going to be today's, it's a 2.5 hour long unscripted discussion from two guys from a political party who are acting as the ideologues, the politicians, and the let's say the press secretaries and the spokespersons for that party. It's not usually done by any political party, and not in the history of independent India, and definitely not scripted. Not from the biggest parties to the smallest parties. Okay, so they deserve some extra respect for that too, definitely. So, and we are going to, by the way, today take Hindi questions as well, as I just found out that they are both comfortable in Hindi anyway, and also Haryanvi. So, Tushar, would you like to take that question that M. Shastri had? Oh, you are muted.
पहली बात तो ये है कि आपको हमारे पार्टी प्रोग्राम की क्लैरिटी नहीं है। ऑब्वियसली ये इनिशियल स्टेज में सबको क्लैरिटी नहीं होगी कि पार्टी प्रोग्राम क्या है। तो मैं अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो जैसे ये फिश मार्केट मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो बिजनेसेस लिबर्टेरियन प्रिंसिपल पे ही ऑपरेट करते हैं, बिजनेसेस सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे ऑपरेट नहीं करते। तो फिश मार्केट नेचुरली ही लिबर्टेरियन प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे ऑपरेट नहीं करती। तो Yeah. जहां तक बात ये हो रही है कि ये तो बिल्कुल जैसे मिले से किसी ने पूछा था कि आपका इकोनॉमी के लिए क्या प्लान है, तो ही सेड कि हमारे कोई प्लान नहीं है, हम सेंट्रल प्लानिंग में बिलीव नहीं करते, हमारा काम है इकोनॉमी को डीरेगुलेट करना। तो इसका थोड़ा सा एक छोटा वर्जन हमने ट्विटर पे भी थोड़ा बोला था कि हमारा काम लॉ बनाना नहीं है, लॉ को हटाना है। क्योंकि लॉज और दूसरी बात ये कि भाई लॉ मेकिंग हमें सीखनी चाहिए। तो लॉ मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड इतनी ज्यादा नहीं है कि आप सिंपल रूल सेट करना है, आपको टेस्ट करके देखना है। और दूसरी बात ये कि हम थोड़ा ना इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस्ड है उसके मुकाबले, पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करने की बजाय। जैसे अभी अगर हो सके तो हम वीडियो शेयर करेंगे उसकी। तो एक चाइना ताइवान का वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे जैसे उनका ऐसा लगी ऊबर को लेके आना था किसी टाउन में। ऐसे मतलब ब्लू स्टोरी है, आप शेयर करना उस पर, टेड टॉक पे दिया हुआ उन्होंने। टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ताइवान से होगी तब आएगा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे, जैसे ना उन्होंने वो अगर सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो वो क्या होता था, वो सबके ओपिनियंस लिए जाते थे, उनको प्लॉट किया जाता था एक चार्ट पे। और जैसे पॉलिटिशियन एक सिंपल रूल देते कि भाई हम ऊबर को लाके आ रहे हैं और ये रूल्स फॉलो करेगी। तो जो सारे अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट थे ना, उनको प्लॉट कर दिया कि वो यस की डायरेक्शन में इतना है, वो नो की डायरेक्शन में इतना है, और इस वजह से है। तो फिर क्या किया, अपना पॉलिसी को मेंटेन करते जब तक के सारे पॉइंट्स ना क्लोजर टू द मीन नहीं आ गए, पॉलिसी मॉडिफाई करते 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 गए। तो इस तरीके से फिर वो उस पॉलिसी पहुंचे जिसने लगभग सारे पर्सपेक्टिव्स को काउंट इन कर लिया। तो अब ये ओल्ड सिस्टम में पॉसिबल तो था नहीं, क्योंकि टेक ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो हमारे आइडियाज इस डायरेक्शन में कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को किस तरीके से ला जाए और पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके। तभी मैं बार बार एम्फोसाइज करता रहता हूँ कि हमें गुड लीडर फैलेसी से बाहर निकलना पड़ेगा और डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, कि ग्राउंड पे जो बंदा एक्चुअली प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो डिसाइड कर सके कि क्या करना है, इसकी बजाय कि दूर बैठा कोई बंदा जिसका ना कोई लेना देना, जिसकी कोई स्किन इन द गेम नहीं है, जिसको फर्क नहीं पड़ता राइट या रॉन्ग होने का, वो डिसीजन ले रहा है या वो पॉलिसी बना रहा है। तो लिबर्टेरियन पॉलिसी, जो पॉलिसी का गोल वो है, आप लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी को पॉलिसी मेकिंग से कंफ्यूज मत करो। फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स अलग है और वो अलग है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होगी। और जहां तक उसकी बात है कि म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन लड़ने की, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हम लड़ते हैं अगर म्यूनिसिपैलिटी के पास कुछ बजट होते हैं। अभी तो बस नाम नाम की म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जीतने वाली बात हो जाएगी। स्टेट स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें इलेक्टोरल विल की सेंस बनती है, क्योंकि आप वहां से आप डिसेंटर, जैसे हमने पिछले उसमें भी बात करी थी कि वेस्ट बंगाल के लिए हमारा क्या प्लान है। वेस्ट बंगाल के लिए हमारा प्लान ये है कि म्यूनिसिपैलिटी को पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए। फर्स्ट स्टेप वो है। फर्स्ट स्टेप ये नहीं कि आप म्यूनिसिपैलिटी में जाओ, म्यूनिसिपैलिटी अभी कुछ भी नहीं करती, कूड़ा नहीं उठा सकती म्यूनिसिपैलिटीज। आप कह रहे हो म्यूनिसिपैलिटीज की इलेक्शन लड़े हम जाके, एंड तो कोई सेंस नहीं बनता। हाँ बोलो। जब हार्डली 5 to 10% ऑफ द पूरा टोटल बजट म्यूनिसिपैलिटीज को जा रहा है और जबकि मैक्सिमम पॉपुलेशन की डीलिंग म्यूनिसिपैलिटीज के साथ है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि हम उसमें करें लॉ। या एक कंडीशन में म्यूनिसिपैलिटी में हम जा सकते हैं, अगर लीगल क्या कहते हैं पावर डेवोल्यूशन कर दी जाती है किसी मिरेकल से हमारे बिना स्टेट पे जाए। अगर पावर डेवोल्यूशन है तो डेफिनेटली हम म्यूनिसिपैलिटी से स्टार्ट करेंगे। मगर जब तक पावर डेवोल्यूशन नहीं है तो हमें पावर डेवोल्यूशन पहला स्टेप हुआ ना कि पावर डिवॉल्व करें में हम, कि हाँ म्यूनिसिपैलिटीज में अब पावर है, अब म्यूनिसिपैलिटीज को हम लिबर्टेरियन प्रिंसिपल से गवर्न कर सकते हैं। मगर अभी म्यूनिसिपैलिटीज पावर ही नहीं है। So I just had one thing to add to to what Tushar has said about most things. That first line really got me when I first read this. These guys are undercooked, naive, need more experience with life, liberty, and society. So I just want to address that one point. All right. So at the end of the day, naivety, because of my experience in actually dealing with business, studying in this country, growing up, dealing with various states, various aspects of business,
The main thing is, I have decided, the reason I decided to, even be a part of this whole movement is that, I decided enough is enough, because it is not easy to run a business in this country. I have had businesses that have closed down for the stupidest possible reasons. I've had to deal with the bureaucracy of, I don't know why any Indian has to even deal with this stuff. So this is me putting my foot down. Like, enough is enough. Like, I don't want to do it anymore. Many people may be satisfied with saying, oh, okay, it's just $100 or it's just $1,000, I'll give it and go. No, enough is freaking enough. Like, I'm done with this system. And, if you think that we are naive and we need more experience, I've had enough experience about it. At the end of the day, I'm glad somebody asked this question, because I can really clearly state the fact that I've had enough. Have you had enough is the question. How long are you going to sit and deal with all these things? How long are your friends and families going to sit and deal with all these things? I've had enough, and this is me. We are here. We are not undercooked in any way. We are we've got enough experience. And situation वो 100 रुपए यहाँ 200 रुपए वहां से भी खराब है, क्योंकि after all the one who has connections with the politicians will get away with it anyway. Yes, that is what is happening in every industry, and it's so unfair to us, right. We'll be here starting a business, and then those guys will be like, you give me 15 lakhs, I will give you a project. No, we don't have 15 lakhs. From where will we get 15 lakhs from? We'll go to somebody else, and you lose the project. Like, how many people suffer in silence because of this? People close down their companies, run away from debtors, hide somewhere in some weird lodge to get away from loan sharks. This is life as it is today. No media channel is ever going to tell you this. You sit down with some of your uncles or whatever it is and what they have been through with their business, they probably will tell you in confidence. But, at the end of the day, it is ridiculous the way business is run today, and it's getting more and more ridiculous as days goes on. Yeah. Next, we'll take mysterious sociologist views on this. I just want Tushar or Anup to comment on that that factor that he brought up, that Maharashtra used to have completely privatized and deregulated emergency services, then it failed. Do you have any comments on that? I don't know. Completely privatized, were they? Okay. Tushar, do you know anything about that? नो आइडिया, मगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ इंटरवेंशन पक्का निकल के आए. ये फ्री मार्केट ऑपरेट कर रही है. That's my hunch as well. Yeah. So even if it is completely privatized, it is still under the same governance, the same kind of structure of governance. How can you operate? Anybody can say everything is privatized, but then we all know what happens. सिंपल सी बात है यार, तुम खुद बताओ, तुम्हारी इंडिया 1991 से पहले बेटर था, 1991 के बाद बेटर है. हमारा सिंपल वन वर्ड में डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, 1991 2.0 लाना चाहते हैं. बस खत्म बात. क्या इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ला रखी है कि ओहो लिबर्टेरियनिज्म ये वो. Yeah. Okay, Mr. Sociologist. Yeah, your thoughts on this. Firstly, I want to point out that experience doesn't mean shit in the real world. Okay. So we have a lot of experienced politicians and political parties in this country, and we know how. I mean, the Communist Party of India was formed in 1925, and Congress was formed in 1895, and Jan Sangh was formed in right after independence and all. And they have been running this country for 70 years or more than that. So the point, I think that the point of experience is absolutely useless here. It's a good idea or a bad idea at the end of the day. Number one. Number two is, I personally feel that, start small, we'll do a pilot project, and then maybe 50 years later, we'll do a big thing. That it doesn't work that way. By that logic, Aam Aadmi Party would have never come to power. Now, having said that, Aam Aadmi Party just went out of power 2 days ago. No, so you may agree that, that's a horrible example. But I would say that they didn't use their time productively. They had all kinds of stupid ideas, and so the people got frustrated with them and kicked them out eventually. Yeah. So it doesn't. So the quality of ideas is what matters, and whether we can appeal to people with the strength of those ideas. Again, experience and all don't matter, and I don't believe that winning a municipality and maybe running it for 5 years makes any sense, because this is a big idea that has to be implemented in a
I'm understanding a nationwide way. And this does not necessarily, I mean, the bargaining has to be done not at, I think, some village or city level. The Yeah. bargaining needs to be done at a bigger level, so Yeah. that the municipalities and the panchayats and all can follow suit Yes. at their own levels. Yeah, So, exactly. I mean, the one pilot Right. project every now and then, that's another stupid idea, in my opinion. Again, I'm not calling M Shastri stupid. He's big fan of his work, his Yeah. whatever he says. But Yeah. what I'm saying is that there are counter examples to what he's trying to say. That's all. Okay, then. Starting the audience questions now. Tushar, question to Libertarian Party of India. Is the safety of an individual who has used his or her right to free speech in a particular context from certain sujuda mobs is responsibility of that individual only? यार देखो, मेरे को पता है तुम किसी चीज के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो, और ऑब्वियसली बात है जब तुम्हारे सामने ग्रुप होगा तो एक बंदा सिर्फ गन लेके नहीं टिक सकता जैसे फिल्मों में लगता है। तो तुम्हारे पास भी तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के चांस हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि हाथ बांधे हुए हैं, एक कम्युनिटी के हाथ बांधे हुए हैं, दूसरी सबको फ्री छोड़ा हुआ है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब सबके पास वो होंगी तो सबके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस होगा, तो डेटरेंस रहेगी, पीस रहेगी, टॉक होगी, क्योंकि सबको पता है भाई अगर लड़ाई हुई तो दोनों मरेंगे। मगर अभी ऐसा है कि एक के पास लेवरेज है, वो जब मर्जी चाहे लॉ तोड़ के अपना सब कुछ कर सकता है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो रहेगी। तो हम वही कह रहे हैं कि हम बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं कि हमारे लिए इंडिविजुअल सेफ है तभी कम्युनिटी सेफ है। अगर इंडिविजुअल सेफ नहीं है तो कम्युनिटी सेफ नहीं है। और वैसे भी अमीर लोगों के पास भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स है, गेटेड कम्युनिटीज है, और बाकी सर्तन से जुदा वालों के पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, फंडिंग है। जो लोग हिंदुत्व सोशलिस्ट होके लिबर्टेरियन पार्टी का विरोध कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, एंड दे थिंक समवन इज गोइंग टू सेव देम समडे। लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन. Does anybody advocating for or speaking for incest and pedophilia should that be considered as free speech, like I guess insinuating to beer biceps incident yesterday? तो इसमें दो अलग चीजों की बात हो रही है। गवर्नमेंट इसको सेंसर कर सकती है, नहीं। प्राइवेट इंडिविजुअल इसको कंडेम कर सकते हैं और सेंसर कर सकते हैं, हाँ। प्राइवेट इंडिविजुअल कहते हैं मेरे को नहीं सुनना, या फिर उस मतलब वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, मगर गवर्नमेंट पुलिस वाले या फिर जजेस आके वो नहीं कर सकती आप ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हमारा पॉइंट वो है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल इंटरेस्टेड है कि उसको ब्लॉक करना है या उसको नहीं सुनना, वो उन पे है, ऑब्वियसली उनका राइट है। सेम ही चीज फिल्मों पे अप्लाई होती है। जो फिल्में आपको पसंद नहीं है मत देखो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो बंदा अपना जो स्टोरी सुनाना चाहता है वो रिलीज ही ना हो। अगर ऑब्वियसली बात है वो इंसेंटिव्स पे काम करते हैं। अगर उनको लगेगा कि भाई ये पॉपुलैरिटी गेन करिए, क्योंकि हाँ मतलब कुछ बंदे चैरिटी के लिए भी करते हैं, उनको छोड़ दो, मगर मैक्सिमम बंदे प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। जब आप म्यूजिशियन हो, आप ऐसे बस ये थोड़ा करते हाँ मेरे को म्यूजिक का प्यार है इसी में सारा म्यूजिक बना रहा हूँ, उसका कमर्शियल वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो कमर्शियल वैल्यू ऑब्वियसली जब आप उसको बाइकआउट करना शुरू कर दोगे तो कमर्शियल वैल्यू चली जाएगी। गवर्नमेंट में यहाँ पे अभी बेस्ट रीजन एग्जांपल दूं, जो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा था, उसमें क्या गवर्नमेंट घुसी? गवर्नमेंट नहीं घुसी, अपना प्राइवेट एक्टर्स इकट्ठे हुए, वो हिंदुत्व नाइट नाम से अकाउंट था उसमें अपना जो भी टैक्टिक्स यूज करने थे करे, और उसके बाद फिर सीधे हो गए वो। And but just a counter to the JD Vance comments on the sort of apologia, because remember he would not have gotten away with saying that to err is human, etc., like even Elon Musk said, if it was in fact directed against Israelis or Jews or African Americans today. He did say that he did allude to free speech only because it was against Indians. Up until like 5 months back, it was okay to say it against white people as well. Now that has stopped. I think right now the Indians are the only ones still vulnerable in USA. And now all of a sudden the tag of free speech is being used to defend bad words against them. But in theory, JD Vance is correct. But he would not have said this if it was against Jews or Israel or black people. वो वाली बात तो मैं मान गया। मैं तो इस एस्पेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जो फाइट थी, जो फाइट बैक हुआ था, वो इंडिविजुअल एक्टर ने नहीं ऑर्गेनाइज होकर किया था। ऐसे तो नहीं था कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे पीछे से कि भाई इसको करो, ये क्या है वो है। ट्विटर को बैन तो नहीं किया, इलॉन मस्क तो कॉल तो नहीं किया था गवर्नमेंट से कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। So there are two different aspects in the previous, message that you put. One was pedophilia and the other one was incest, right? So that's the two different aspects of it. See, pedophilia is very clearly demarcated with the age limit, right? So then that's kind of like a different thing altogether. That is kind of against the law, right? Because the age limit is set to 18 or 21 or whatever that is.
But for the other aspect of things, like if the government has to get involved, who draws the line here as to what where is the line drawn between what is being said or not? Right? It could be anything. It could be whatever happened in the podcast yesterday, other than the pedophilia aspect of it. Whatever happened, like who draws the line? Is somebody going to say, okay, this is the right thing to say, but that is not the right thing to say? So this is where I think where Tushar also is coming to say, like if we regulate it, we are going to bring a vulnerability into that community by attacking that particular one person. The community has to now have more responsibility than ever before for this country. So basically, you have the responsibility to take it upon yourself to unsubscribe or whatever it is that you need to do in order to show that you don't support this individual. After saying all of this, if he still has like 25 million subscribers, then I don't know what the government can come and do and say, whether this is right or not, right? So it is just one of those things. And the Beer Biceps event was in a private situation. It was a ticketed community, and the video was for memberships only, not for anyone and everyone anyway. Right. Why not focus wholly on a state like Goa, show results of the full libertarian policies, and then move fast into other state, give us proof of concept? बात सही है आपकी. गोवा है लिस्ट में, 5 स्टेट्स है लिस्ट में, वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, गोवा, दिल्ली. Okay. This is a good question. What is the Libertarian Party's stance on women's reservation in Parliament, and what changes would occur if a Libertarian government came into power? Afuera, Abhijit. Everybody is equal. We believe that women can do equal things. आपका जेंडर कैसे डिसाइड कर रहा है? आपकी लेजिस्लेटिव एबिलिटी या लीडरशिप एबिलिटी, ये कब से होने लग गया? Right. Let me. Go on. We are not politicians. That's the first thing people need to remember. We are all engineers and things like that. We have women engineers who do very well in the companies. We have got we've got everything right now. These reservations are actually shedding a bad light on them. It's as if they can't do something or whatever it is. Like at the end of the day, very capable. Every person is very capable in these scenarios. बाकी वैसे मैं आपको एक साइंस के बारे में बताता हूँ कि ये इन जनरल टेंडेंसी है, ये पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड है कि रिस्क टेकिंग के मामले में मतलब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस में मेन आर वे लेस इंटेलिजेंट देन वुमेन. मतलब इनसेन रिस्क्स लेने ना तो मेन ज्यादा इन्वॉल्व मिलेंगे. जैसे अब यहाँ पे अभी एक पॉलिटिशियन, मतलब जैसे अभी वो स्ट्रीमर था, अगर आपने देखा हो, वो उसने इलेक्शन लड़ा था और उसको 60 के आसपास वोट्स मिले थे. विमो मेगनर्ड. हाँ, तो उसके इक्विवेलेंट आपको वुमेन नहीं मिलेंगी, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि भाई वुमेन के लिए कोई बैरियर टू एंट्री है पॉलिटिशियन में, वो बकवास मारते हैं, वो फेमिनिस्ट एजेंडा है. बात ये है कि वुमेन स्टूपिड रिस्क नहीं लेती मैन की तरह इन जनरल, क्योंकि वो इस मामले में थोड़ी रिस्क टेकिंग मामले में थोड़ी स्मार्टर है. और ये इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में भी देखने को मिलता है कि वुमेन ट्रेडर्स आउट परफॉर्म करती है मेल ट्रेडर्स को. उनकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन उनकी थोड़ी बेटर है. तो मतलब इन जनरल अब ये नहीं है कि भाई अभी तुम एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले आओगे, भाई ये देखो ये बंदा कितना बड़ा नर्ड है, तो उसकी बात नहीं हो रही. मगर इन जनरल नोट ऑब्जर्व किया कि स्टैटिस्टिकली वुमेन की प्रोबेबिलिटी की जो कैलकुलेशन है वो बेटर होते हैं. तो इस वजह से जिसमें हाई रिस्क का चांस होता है ना, फेलियर का ज्यादा चांस होता है, सोशल एम्बैरेसमेंट का चांस ज्यादा होता है. अब उस बंदे को कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही होगी जिसको 60 वोट्स मिले हैं सिर्फ. तो वो सारे अवॉइड करेंगे. तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम ही. अब ये नहीं है कि वुमेन रिस्क नहीं लेती, मगर मैक्सिमम वुमेन उन एरिया थोड़ा कंस्ट्रेंट्स इस तरीके से हैं कि वो उतने रिस्क टेकिंग उसमें एनवायरनमेंट में जाती नहीं. अब ऐसा नहीं है कि जीरो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मगर फिर भी लेवल ऑफ सैक्रिफाइस ज्यादा करने पड़ते हैं मेन के मुकाबले. And once free market comes into the picture, if companies just decide to hire men, they won't have enough employees. Like the market will be so booming, you will need to utilize all your resources, no matter who they are. And that's why we feel like women will be automatically pushed up the chain. So now playing the devil's advocate here, if there aren't any reservations, what if women face the brunt of patriarchy and the voters who would not like to see women in power, or male politicians who would not like to see women in power? Isn't that the way to beat them? Or even in terms of, let's say, stuff like women's commission and stuff, since most laws are not followed in the villages where a woman is getting beaten up by her drunk husband, what to do with her then without things like women's commission and separately pro-women laws?
which bypass other non-gendered laws. अगर हम सिर्फ इस बात पे फोकस करना शुरू कर देना कि इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, बेशक और जेंडर सारे जेंडर्स इंक्लूडेड है, मेन वुमेन के अलावा भी, हम सिर्फ ये इंश्योर सिस्टम इस तरीके से बनाते हैं कि इंडिविजुअल की लिबर्टी अक्रॉस द कंट्री इंश्योर्ड है। तो मेन वुमेन ट्रांसजेंडर बाय जेंडर सब कुछ इररिलेवेंट है। तो हमारा फोकस है उसको बिल्ड करना, उस सिस्टम को बिल्ड करने में होना चाहिए कि इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ हिज एनी कलेक्टिविस्ट आइडेंटिटी, उसकी लिबर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सिस्टम उस हिसाब से बिल्ड करते हैं ये, क्योंकि ऑटोमेटिकली बात है, अगर आप एक को प्रिविलेज देना शुरू करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कंप्लेन करेगा कि मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों, और फिर तभी ये जो केसेस निकल के आ रहे हैं ना, जो ये मेन को बहुत ज्यादा हरासमेंट सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है लीगल सिस्टम में, तो वो इसी वजह से, क्योंकि आपने सिस्टम हमेशा टिल्ट होता जाएगा किसी न किसी डायरेक्शन में, बट वो रहेगी हमेशा, बायस रहेगा। मगर अगर आप न्यूट्रल लोगे चाहोगे, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर यू विल बी ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल, आपके कैरेक्टर के बेस में आपकी जजमेंट होगी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। Yes. Wait, before we take this question, Mr. Sociologist has a point to make. So my basic understanding, and I haven't studied as much as you guys on libertarianism and all that. My basic understanding is that individuals, the state's role should be the enforcement of contracts, essentially. Like I mean, in the sense that if there's a violation of contracts, if there is a violation of laws against the individual, then only the state intervenes. That's my understanding, right? Yeah. If that is the case, then that is where you protect the individual against any kind of harm that they may experience, and at the same time, I guess the state does not enforce unnecessary group identities and favor others. I think that's the broad aim, which was the Savarkarite view of polity and lawmaking anyway. Yes, so in a sense, this is the state being being powerful without showing its strength. I like it's a contradictory thing, but its beauty is that we enforce, the state should work only to enforce stuff when we call on it to do so, when we require it to do so. So it serves us and we do not serve it, or we do not serve a group. Perhaps that is my understanding, and that's where is the beauty of what we're trying to propose. Again, I believe that these are all incremental changes at this point, because you can't I mean, that's what people are asking questions on. How can you deal with this huge issue? How can you deal with that huge issue? I think the important thing is to plant some ideas in the educated people's minds of India, so that we can ask for at least these kind of things, and we can create a pressure. Think of and this is to my friends on the channel as well. What my understanding of this is that think of Muslim voters in this country. They have no loyalty to any political party or ideology, except their own interests as an interest group. In that sense, so if our interest groups are to have less state intervention, which is going to protect our own rights as individuals in the long run, then perhaps not loyalty to an ideology or party at this level, but it will help us to become a powerful agent of change in this country without conforming to a party's program, which may not be helping us. Perhaps that's how I understood these things. I mean, you guys are free to correct me if you couldn't have explained it any better. It was beautiful to hear and listen to. Thank you so much. Okay, next, Avinav is asking what are your plans for West Bengal? Are you ready to answer this question as of yet? मैं पिछली बार भी बताया था, डिसेंट्रलाइजेशन और लॉ एंड ऑर्डर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपकी म्युनिसिपैलिटीज, टाउन्स, और सबसे पहले सिटीज से शुरू होगा, सिटीज और टाउन से, उसके बाद स्लोली विलेजेस पे शिफ्ट करेंगे। और डीरेगुलेशन मतलब कि इंडस्ट्री सेटअप करना आसान होगा, गेटिंग रिड ऑफ ऑल द अननेसेसरी टैक्सेस, बाबूडम की पावर पे कर्व करना कि हरासमेंट नहीं कर सकते, उनके स्कोप को लिमिट करना। तो ये सारी चीजें मतलब बेसिकली आपकी जो भी इनएफिशिएंसीज हैं जो कि आपको उसमें कर रही हैं, आपकी फ्रीडम में इनहिबिट कर रही हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम में इनहिबिट कर रही हैं, उनको हटाना। और गन राइट्स ताकि आप खुद को सेल्फ डिफेंड कर सको। Yes.
How do you get rid of Hafta Vasuli other than just gun rights? Because Hafta Vasuli is a huge infrastructure in West Bengal, which includes politicians, police officers, and bureaucrats. That's a whole economy in itself, and that's the reason that even if Mamata Banerjee today wants in her mind to business to happen in West Bengal, it can't happen. जब ये होगा ना हाथ में हर किसी के तो करके दिखाना. That's probably fair. But are you going to नहीं, hope बात तो for देखिए, just gun rights? कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सिर्फ एक ही ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकता है, दूसरा ग्रुप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता. लोगों के हाथ में अगर इजी एक्सेस टू आर्म्स होगा तो वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. जैसे पिछली बार भी मैंने एग्जांपल दिया था कोरियंस का, Right. और Exactly. जैसे बिहारी का भी एग्जांपल दिया था, और एक और एग्जांपल जोड़ूंगा मैं. टेररिज्म के टाइम में पाकिस्तान उसमें पंजाब में भी लोगों ने गन्स वगैरह होल्ड करना शुरू कर दिया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. जब क्योंकि आप ओवर एस्टिमेट करते हो कि गवर्नमेंट पुलिस या पुलिस की कितनी एबिलिटी है आपको प्रोटेक्ट करने की. जब केओस हो जाता है तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती. यहाँ पे जब उनका एक सेंट का यहाँ पे हरियाणा में पंचकुला में वो हुआ था, ट्रायल हो रहा था, तो उसके सारे भक्त वगैरह आ गए थे यहाँ पे पंचकुला में. पुलिस कुछ खास कर नहीं पाई थी उसको कंट्रोल करने के लिए. तो आप ओवर एस्टिमेट करते हो कि गवर्नमेंट आपको सही में प्रोटेक्ट कर सकती है. इंडिया चल रहा है आपके गुड बिहेवियर की वजह से ही चल रहा है, और आपकी पावर ही एनहांस करी जा रही है आपके राइट टू सेल्फ डिफेंस को उसमें ऐड करके. अभी आप लाठियों से काम चला रहे हो. Right. Exactly. This we just kind of answered anyway. This is a nice question. Does LPI have any way to incentivize having good quality air around us to remain livable, or it won't interfere with that? We actually answered this in our podcast as well. I think Tushar can take it away. Yeah. करा जा सकता है, मगर हम कोई इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं देने वाले. हम बस जो रेगुलेशंस हैं उसको डालते जाएंगे. जैसे इंपोर्ट आसान कर दिया, एक्सपोर्ट आसान कर दिया, टेक्नोलॉजी जिसने इन्वेस्ट करना उसमें कर दिया. बाकी अगर उस तरीके से एड्रेस करें, सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू करें कि पोल्यूशन जनरेट क्यों हो रहा है, उस डायरेक्शन में जाना है, और लीगल उसमें डायरेक्शन दे. तो टॉर्ट्स लॉ को थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है. टॉर्ट्स इंप्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया में. टॉर्ट्स का बेसिकली ये है कि आपने अगर मेरा कुछ प्रॉपर्टी का डैमेज किया तो मैं आपसे वो ले सकता हूँ, क्लेम ले सकता हूँ. तो अगर आप उसको मानते हो कि एयर कॉलम मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको आपने पोल्यूट किया है, तो मतलब उस तरीके से है, मतलब लीगल डायरेक्शन में जाने का तरीका है. तो टॉर्ट्स अगर लीगल फॉर्म में बात करनी है टॉर्ट्स. मगर अगर इंसेंटिव में उस तरीके से बात करनी है कि हम कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देने वाले तो नहीं. हाँ, मगर उस डायरेक्शन में जरूर कि टैक्सेस से और रेगुलेशंस जो उड़ानी है, हाँ उस डायरेक्शन में. Right. Next is, if the ONDC is privatized, is the concept of having a platform for small businesses to compete online in line with libertarian ideas? ONDC privatized. What is ONDC? Did he meet ONGC? ONGC, I think. Yeah, probably. नहीं वो समझ गया मैं. ONDC की बात हो रही है. No. It's the open network of digital commerce. Okay. Okay. See, the small businesses will thrive now because now innovation takes precedence over favoritism. That is the biggest thing here. No longer are your top companies going to be favorites, right? So as long as you can innovate, you can grow. There is nothing stopping you because your customers decide your fate. Ultimately, your investors decide, how fast you can grow, and your customers decide your fate. And there is nothing out of the ordinary that is going to stop you. Nobody else is going to be able to do anything, any golmaal outside the plan to overtake you. They also have to equally strive as much as you to grow. So, having a libertarian system is great. और दूसरी बात ये कि आपने ONDC यूज करके देखा है, पता चल जाएगा आपको. यूज करके देखा उसको. वो इसी वजह, वो बेकार यूजर इंटरफेस है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि वो प्राइवेटाइज नहीं है. और यूपीआई मैक्सिमम बिहाइंड द सीन्स है, इस वजह से वो ठीक है, क्योंकि दूसरी कंपनीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया. तो आपको बेस्ट एग्जांपल है शॉपिफाई का बिजनेस मॉडल स्टडी करो. वो सॉर्ट ऑफ ONDC इक्विवेलेंट है. तो आप देख सकते हो शॉपिफाई सर्विसेज कितनी कॉस्टली और कितना स्मॉल बिजनेस. शॉपिफाई अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग वगैरह ये सारा कुछ शॉपिफाई ने एनेबल किया. आपको पता चलेगा कि शॉपिफाई कई गुना बेटर है ONDC के मुकाबले. अच्छा. Is LPI aware of ancient India's free market ways of life or history with India's free market? This is just a personal question. उसका वो वाला सिस्टम काफी बढ़िया था.
मर्चेंट गिल्ड्स वाला. Yeah. Take loans from local temples, give them back interest for funding their journey outwards. इसके बारे What में मेरे को national? उससे पता चला था संजीव सन्याल से कि Yes, ये yes. मेरे को ये पता था ग्रीक्स में ये सिस्टम है, मगर हाँ. मेरे को पता चला अच्छा इंडियन टेम्पल भी इस चीज पे ऑपरेट करते हैं. Yeah. तो उनका एक लेक्चर था तो मेरे को पता चला अच्छा इंडिया में भी सेम सिस्टम है. फिर उसके बाद फिर अभी उनकी डैरलम्पल की बुक आई थी अभी रिसेंटली, वो तो सेम. हाँ. Yeah. Golden routes. So it's almost a regurgitating of everything Sanjeev Sanyal said 10 years back. That was hilarious. What national security doctrine does the LPI follow or endorse? Can we just put Milton Patel Friedman on in the audience somehow? Like, he's got a lot of questions, and I think it'll be easier to, because I want to now know where Milton Friedman comes from. What is his environment? Is he a student? Bangladesh. Like what? I mean, he's a persecuted minority in Bangladesh. In Bangladesh. Oh, तो yeah, he lives नेशनल in सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अभी इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब कि जो अभी नेशनल पॉलिसी उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है. बाकी कुछ हैं थोड़े एक्सट्रीम प्लान्स हैं, उनको अभी थोड़ा रिवील नहीं करा जाएगा. कुछ हैं रेडिकल प्लान्स हैं जो आपको पसंद आएंगे, अभी उनके बारे में बात करने का टाइम नहीं है. अरे नेबर do you believe in हाँ अच्छा, do you believe in acknowledgement of cultural pretext of the country before applying libertarianism? हमारी कंट्री लिबर्टेरियन ही थी. देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, अगर जब भी सोशियोलॉजिकल टर्म से बात होती है ना तो चाइना और इंडिया का कंपैरिजन होता है. चाइना और इंडिया का कंपैरिजन होता है कि चाइना स्ट्रॉन्ग स्टेट वीक कल्चर और इंडिया स्ट्रॉन्ग कल्चर वीक स्टेट. तो लिबर्टेरियनिज्म कोई एनॉमली नहीं है. अभी कल ही मेरे को उसका पता चला, केजरीवाल ने एक बुक लिखी थी अपनी, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उन्होंने बुक लिखी थी, बेसिकली मैंने विजन बताया. हाँ स्वराज. तो कंट्री के लिए उन्होंने विजन लिखी थी, तो उसमें उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी. तो उसमें बेसिकली बेसिक पॉइंट यही था कि वैशाली नाम का एक किंगडम था, वहां पे राजा था. राजा का मेन काम बस वो तो आर्बिटर से ही होता था, जो कि हम प्रमोट कर रहे हैं. राजा किंग इज द आर्बिटर, और ग्राम सभा आपस में वो करती थी, लॉ मेकिंग करती थी, और किंग उनको बस कोऑर्डिनेशन बना के रखता था. तो ये कोई नया नहीं है, नोवेल्टी नहीं लेके आ रहे हम, ये पहले भी सिस्टम एग्जिस्ट करता था. इंडिया हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रही है और स्टेट वो विलेजेस और टाउन स्ट्रॉन्ग रहे हैं. और जिस राजा ने ज्यादा सेंट्रलाइजेशन मरवाने की कोशिश की है उसके लौड़े लग गए हैं. और अशोका ने यही किया था, औरंगजेब ने यही किया था. बाकी जो लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे थे उनका डायनेस्टी अच्छा चल रहा था. इंडिया फंक्शन नहीं कर सकता, इंडिया डिसफंक्शनल सेंट्रलाइजेशन की वजह से. यस, ये जो पॉपुलेशन की कंप्लेंट करते हैं ना कि पॉपुलेशन ज्यादा की कंप्लेंट वही करता है जिनको डिसेंट्रलाइजेशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में आसान है कम पॉपुलेशन को मेंटेन करना, मगर जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम एसेंशियल है जब आपको बड़ी पॉपुलेशंस को मेंटेन करना होता है. बड़ी और डाइवर्स, मतलब कल्चरल, रिलीजियस, लैंग्वेज का कुछ होमोजेनिटी नहीं है. हाँ. Even now, right, people are questioning why a lot of the taxes should go to Bihar and places like that as opposed to that's the thing about decentralization. I mean, like at the end of the day, you will reap your rewards for merit. We are pro merit. You know, like those kind of problems will not exist in the libertarian system. And the best part is all the investors in Bihar will now get keyed up because they know they are not going to get handouts. They cannot just sit back and relax. They will compete. And they will show their true strength and their true vision, and all their creativity will start coming out. So this is going to lead into like a cascading set of escalating events. So wait, let's just take Mr. Sociologist's reply to this question only, then we'll take Rishabh's question. Okay, Mr. Sociologist has something to say. Regarding the cultural thing, I was actually wondering about this earlier, a few days earlier. Actually, I have seen this in West Bengal a lot, where people who study in Ramakrishna Mission schools or St. Xavier's and all that, right, they turn out fine, normal till they go to a government institution when they become leftists and Naxalites. Okay, so I was absolutely that if temples were free, and the way they funded education earlier. I mean, education was in the hand of temples and these kind of religious church and all that stuff. Okay, and this was private. You could send your son or daughter there, whatever. That was actually better for the national unity and culture.
What Yeah. happened with the government coming to power is the government sponsored its own whatever ideology and upheld that ideology at the cost of national unity and And culture at the and cost all of that. quality education. And of course the quality was horribly sacrificed. Yes. That goes without saying. So Yes. one, like the best example of how cultural degradation has happened due to government intervention can be seen in West Bengal, and by the examples that I just gave, like where people are normal, they study in a school led by some religious institute or even private institution, and then they go to college which is government, and they become, you know, all kinds of revolutionaries who go against the country and the state, Yeah. and want state intervention all the time while Yes. demanding no accountability on their part. So it's all weird, but that whole nexus of ideas enters in mostly in government sponsored institutes. Yes. Okay. I missed John Park's question earlier on. I'll take it after Rishabh's. Okay, John Park, wait for it. So Rishabh is asking, I have a hunch the Delhi elections is the first time the middle class voted as a bloc. Can this be seen repeated in other clusters, urban clusters, and how will LPI capitalize on this trend if this is a trend in fact? हमारी सारी बैटिंग इसी पे है कि अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, मिडिल क्लास बढ़ेगी और उनकी वैल्यूज डोमिनेट करेंगी इलेक्टोरल डिस्कोर्स को। बाकी इस इलेक्शन में बताना, मतलब इस डायरेक्शन में कंक्लूसिवली बताना कि मिडिल क्लास ने एज अ ब्लॉक वोट किया था, तो टू अर्ली टू कॉल है मेरे हिसाब से। ओके, हाँ, उतना डेटा आया है क्या? ग्रैन्युलर डेमोग्राफी डेटा आया नहीं है शायद अभी तक। डोंट यू थिंक जियो लिबर्टेरियनिज्म इज बेटर देन क्लासिकल लिबर्टेरियनिज्म? मेरे को पता नहीं क्या डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। What is geo-libertarianism? I don't know. Okay. Next is, do you believe in libertarianism at a social level? मतलब? Like, even on a personal level. Geo-liberal, it is Georgism. Okay. Basically, the taxation system and is derived from the land and stuff like that. यार मैं बताऊं ना, तुम फालतू में कंफ्यूज करो लिबर्टेरियन को, पता नहीं क्या हु हा मचा रखी है। हमारा सिंपल सा आइडिया है कि भाई तुम अपना जीवन शांति से जियो, गवर्नमेंट का तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बात खत्म। तुम बाकी जो मर्जी डिस्कोर्स करना करो, हमारा सिंपल पॉइंट ये है, गवर्नमेंट गेट ऑफ माय बैक। Yeah, basically that's the answer to even Abhay's question here. Basically the way the libertarians started splitting us, they started just making libertarianism for their own countries. That is what happened. You know, so that's why there are these various forms of libertarianism that you see, but the general concept is like, hey, don't take away the rights of an individual. Right, that kind of answers the other question as well. Okay, now Ninadi is asking, can we not say like real communism can never be implemented in the same way real libertarianism cannot be implemented? Is that a possibility? Real communism should not be implemented, first of all. नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप रियल कम्युनिज्म को आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, और रियल लिबर्टेरियनिज्म डिफॉल्ट है। Yes. How will you? But let's take his question a little more seriously. A libertarian government, a government which believes this, what you just said, Tushar, that can never be implemented. What if that is the case? Do you believe in that? नहीं, मतलब अगर आप क्वेश्चन करोगे इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल है, नहीं, मगर अगर आप स्टेजेस में बात कर रहे हो कि कुछ पॉकेट्स में बेटर होगा, कुछ पॉकेट्स में वर्स होगा, तो वो तो हो सकता है। कुछ बेटर, कुछ पॉकेट्स हो सकता है एनार्को कैपिटलिज्म की डायरेक्शन में जाएं, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट्स मिनार्किज्म की डायरेक्शन में जाएं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई, मतलब कि जैसे इंडिया में भी है ऐसे कि कुछ एरियाज बहुत बढ़िया हैं, कुछ एरियाज बहुत बेकार हैं, कुछ एरिया में ग्रेडेशन है और वो को एग्जिस्ट करते हैं साथ साथ में। तो ऐसी गवर्नेंस में भी हो कि कुछ एरिया ज्यादा सक्सेसफुल हो, हर एरिया को मतलब फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से बेस्ट गवर्नेंस मॉडल क्या है। मगर अभी वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि उनको पता चल सके कि हमारे हिसाब से बेस्ट गवर्नेंस मॉडल क्या है, क्योंकि सिस्टम इतने ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। It's like adopting a new technology, I would say, and India is no stranger to that anymore. UPI, it was initially said this, everybody did it. Same thing with libertarianism. The moment they realize their neighboring state is free as a butterfly, you know, they will start really seeing, hey, you know what, you know, it just the people have to kind of wake up to this, and they will. Who would have thought uneducated rickshaw pullers and sabzi walas could use UPI?
everyone was a naysayer, Chidambaram and Same all. thing They happened said with the it mobile can't phone. happen. Who everybody was Right, thinking, oh, this is right. a rich man's How will they device use and it? all. No. Yes. Now What an everybody elitist has view. Yes. like 2-3 phones, if I may add. That's what they Yeah, have. yeah. How will you reform judiciary, Tushar? हमने पिछली बार भी बताया था, Yes. उससे स्टार्ट करेंगे प्राइवेट आर्बिट्रेशन से सिविल केसेस के लिए। इसमें उसके सबसे बाद ज्यादा फिर counter questions और उसके बाद फिर अपना इसको जुडिशरी को थोड़ा डिसेंट्रलाइज करेंगे कि अपना थोड़ा लोकल कोर्ट्स Yes. में थोड़ा इंपॉर्टेंस मिले। तो अभी तो Yes. इसमें थोड़ा करप्शन है, थोड़ा ऐसे आप अपॉइंट नहीं हो सकते जज वगैरह, तो थोड़ा होंगे उस डायरेक्शन में। मगर प्राइवेट आर्बिट्रेशन काफी हद तक सॉल्व कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस सिविल नेचर के ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल नेचर के कम होते हैं। Yes. Can you define what is the duty of a libertarian government? Everyone says what Referee. state shouldn't do, but I want to know what it should do. Unless you're वैसे ये सारे क्वेश्चन ना हमें अनूप सर का पॉडकास्ट जरूर देखो, उनमें उसमें हमने एड्रेस किए हैं, मगर फिर मैं रिपीट करता हूँ। रेफरी, गवर्नमेंट का रोल है रेफरी। फ्री मार्केट की जो हम सारे गेम खेल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल है रेफरी। अब वो रेफरी या तो इलेक्टेड हो सकता है या वो प्राइवेट हो सकता है, मतलब जिसके लिए कंपटीशन, उस पोजीशन के लिए कंपटीशन हो सकता है। वो हर एरिया को अपनी अथॉरिटी है डिसाइड करने की हमें क्या सिस्टम चाहिए। मगर बेसिक बात ये कि गवर्नमेंट का रोल सिर्फ रेफरी का है। रेफरी जैसे रेफरी का होना है ताकि गेम चल सके, नहीं तो फुटबॉल में, जैसे फुटबॉल के गेम में रेफरी की जरूरत है। Yes. बंगाल वाले तो समझते ही होंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे क्रिकेट मैच में we are the referees and you're all Lionel Messi's and Yes. Cristiano Ronaldo's. That's what Yes, and sometimes a referee can end up favoring one player or one team over the other, but that only happens sometimes, not all the time. Otherwise, people would have stopped watching football. Okay, this is next two questions are kind of similar, and this is where I think that the only thing I disagreed with you guys on in the last live stream near the end. I think your answer was a little too casual, let's say. So how will you tackle USAID in regime change things? People who don't want India to function well, they are going to keep on sending money. What do we do about that? And the next, let's just club these two together. A position on FCRA regulation. Okay, these two questions. तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से एड्रेस करता हूँ। तो पॉइंट ये था मेरा बताने का कि अभी हमारी वही सेम वाली बात कि हमारे लोगों के हाथ बांधे हुए हैं, उनके हाथ खुले हैं, तो वो तो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं, हमारे लोग काउंटर एक्सर्ट नहीं कर सकते। पहले पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट ये हमने कभी भी मेंशन नहीं किया कि हम सिक्योरिटी अपरेटस में चेंज करने वाले हैं। हमारा पॉइंट ये था कि स्पाइज हमारे ऊपर ही स्पाई ना करना शुरू कर दें। वो तो सारे एग्री करते होंगे कि स्पाइज को हमारे ऊपर ही स्पाई नहीं करना शुरू कर देना चाहिए। Yes. इसकी तो सेंस बनती है। तो पॉइंट ये था कि अपना फ्रीडम की जरूरत है ताकि कंट्री स्ट्रांग हो सके। और अगर कोई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जीरो सम गेम है पॉलिटिक्स, दूसरे लोग ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करेंगे ही। मगर पॉइंट है कि आपको आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उसको काउंटर कर सको। तो उसका बेस्ट है कि अब इकोनॉमिक अगर आप स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप काउंटर कैसे करोगे? तो पॉइंट यही था कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो ताकि आप उनको काउंटर कर सको। कोई सोर्स कोई निकल के आए, जो मर्जी आ जाए, आपके पास इतना कैपिटल हो कि आप उसको काउंटर कर सको और गवर्नमेंट पे ना रिलाई करना पड़े आपको। बेशक गवर्नमेंट किस भी टाइप की आई हो, कि आप प्राइवेटली भी, आप इलॉन मस्क को क्या किसी ने गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई चलो आके लड़ो तुम फ्री स्पीच के लिए? तो खुद का इनिशिएटिव था ना, उसके पास प्राइवेट कैपिटल थी कि वो सारी चीज को इन्वेस्ट कर सकता था। तो पॉइंट यही है कि हमारा फ्री सिस्टम होगा, हमारे ग्रेट मैन को चांस मिलना चाहिए फाइट करने का। उनको सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि गवर्नमेंट होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, ऐसे तो हम बेबस हैं, ऐसे तो हम। अभी हमारा सिचुएशन ये बनी हुई है कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ इलीगल है। कुछ भी आप नया सोचो ना, पहला क्वेश्चन नहीं होता ये इलीगल तो नहीं है। बेशक सही हो, बेशक आप सही चीज सोच रहे हो, फिर भी आपके पहले दिमाग में चीज यही आती है कि इलीगल तो नहीं है ये। How will you tackle urban nexus? Even blockchain, it can be used for these credit reportings and all of that, and decentralized systems can help. How will you tackle? दूसरी बात ये भी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को सबवर्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एक एरिया को इंडिविजुअली फ्लिप करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा। अब स्विट्जरलैंड देखो, स्विट्जरलैंड की आप स्विट्जरलैंड मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा। स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री पढ़ो, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उन्होंने कोई कंट्री उनके एंटर भी नहीं कर पाया। उन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रांग वर्क की। तो हमारा जो आइडियल कंट्री है हमारे लिए वो स्विट्जरलैंड है कि भाई वो अपने काम से मतलब रखती है और लोगों को अपने डिसीजन खुद लेने देती है। हम स्विस मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं कि मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम हो, सारा कुछ हो। हमारा आइडियल, अगर आप किसी को सोचने कि भाई लिबर्टेरियनिज्म किसके बारे में सोचते हैं, हम स्विट्जरलैंड के बारे में सोचते हैं। अमेरिका के बारे में नहीं सोचते, हम स्विट्जरलैंड के बारे में सोचते हैं।
Okay. Why not Argentina? They are अभी just उनको थोड़ा टाइम लगेगा ना उसको थोड़ा उस Okay. लेवल पे जाने में. Okay. Yeah, and these days, at least some right wing or some Hindutvatis agree that that is the reason why India did not completely fall to the invaders, because it was so decentralized. Because if it's one rigid spine and you cut off the head, then the entire society falls immediately. Yeah, they Like never used to reached happen. South India. They never really reached Yes. South India. It's such a vast Yes. country. They never really did. And think of Europe. They were pagan one day, become Catholics one day, then the entire society becomes Protestant one day. Now they are going to be Muslims the next day. Entire society goes hand in hand with whatever is happening in some portion of the society. That's the problem. Yeah. So how will you tackle? Where did it go? Wait. Yeah. How will you tackle urban Naxalism, meaning the leftists and the Maoism sympathizers in academia, media, etc., journalism, etc.? अच्छा क्वेश्चन. तो वही उनके टूल्स उनके अगेंस्ट यूज करना. हम पे बेसिक बात ये है कि हम ये एग्री करते हैं, हम प्रॉब्लम्स पे डिसएग्री नहीं करते होंगे, हम उनके मेथड्स पे डिसएग्री Right. करते हैं. तो हमारे पास मेथड्स बेटर, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स बेटर है. और तो कुल मिला के बात ये है कि फायर विद फायर. Right. Yes, counter narratives. That's what I'm in favor of anyway. What is LPI's stand on multiculturalism or secularism, and how do they deal with exclusivist groups who oppress the other groups yet call upon phobia? This is kind of answered today already. This was a question from long back. Does LPI have their constitution? What is the party structure? पार्टी स्ट्रक्चर अभी फ्लैट है. इंडिविजुअल Okay. उसको मिला हुआ है कि अनूप सर कंटेंट में देख रहे हैं, हमारी एक टेक की टीम है, एक मार्केटिंग की टीम है, तो मार्केटिंग मतलब उसकी पीआर की टीम है. तो फ्लैट स्ट्रक्चर है, अभी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. हम थोड़ी Okay. अभी क्रॉस फॉलोइंग बढ़ रही है, तो फिर स्ट्रक्चर बन रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारा अभी, वो है एक मैनिफेस्टो है. आप Manifesto. उसको आप उसको चेक कर सकते हैं अपना सर्च करके ट्विटर पे, वेबसाइट पे भी है. Okay. Yeah. How many? This is a funny question. How many libertarian books have you both read, and what are you? What would you suggest? Easy and advanced books We on actually libertarian. did a podcast just for books. Yes. I mean, you should read that. Yeah. And I would say, like there are different types of books in the sense that there are of course economic perspective books, philosophy books. There are also like fiction-based books that help you understand individuals' freedom and all. And when I asked Atlas that Shrugged. question even to the fellow guest casters who were there, I asked them on 1, 2, 3 to say which book would you suggest to read first. They all said Atlas Shrugged Atlas by Shrugged. Ayn Rand. They all unanimously said that if you want, you can read Foundation of Ayn Rand first and get into that. And this is where I would say you should start. Ideally, you should start from here, but then you will go down the rabbit hole. You will go read a lot of different types of books, and like Rothbard, you can, even if you don't agree with their perspectives, like I would definitely suggest you read all of these, and of course. you'll find these books. Yeah. How will you? Basic Economics by Thomas Sowell. Yes. Yes, by Thomas. And coincidentally, this person, Rishi, who is just asking this question, was today only saying in the previous live stream that he is today reading Basic Economics only from the morning. Okay. How will you reform farming considering farmers themselves don't want privatization? They don't want privatization under this government setup. They don't. But under the libertarian privatization, they will see. Privatizing collective farms कब से हो गए हमारे पास? Right. I think it's a misunderstanding of narratives and word choices, which you will have to counter through I guess, awareness campaigns. वही तो मैं बात कर रहा हूँ. प्राइवेटाइजेशन की हमारे पास प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज हैं, अडानी प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज कोल्ड स्टोरेज ऑपरेट कर रही हैं. मैंने लैंड तो वैसे भी प्राइवेटली ऑपरेटेड है, तो किस एस्पेक्ट की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है? See, but these guys don't want privatization because they don't trust them. It's as simple as that. Like the trust has not been established. Let's say we remove ourselves from their life completely and just play referee, right? They will do it on their own. What is stopping them? There is no regulation that's stopping them. Trust is definitely very low on any authority. Right now, unfortunately, even there was this BBC drama about, sorry, not just BBC, there were plenty of articles about it that the farmers are basically, they are ruining the land because they don't know when it will be their last. They don't know when so they are not fertilizing it properly. They are not doing it properly. But if they have a good vision, nobody is bothering them, they will make it something else because yield is more important than
anything else for them. Yeah. Now, how will you reform farming? Oh, ये तो हो गया. Wait. कहाँ गया अगला question? 1 minute. रुको. Yes. How would LPI tackle public infra development? Please go into detail about your vision if possible, since infra development in areas such as residential areas may not be profitable for private sector. Not नहीं, true though. ये नोशन गलत है, ये assumption गलत है। इनोवेशन अब काफी हमें रोड्स एक्सपेंसिव पड़ रही हैं क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव उस पर ऑपरेट करता है। रोड्स अब बहुत चीपर हो चुकी हैं और आप रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स चेक करो, आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करो कि रिसेंट रोड टेक वगैरह, तो उसमें अभी एक सिंपल जैसे यहाँ पे हरियाणा में तो चल रहा है कि रोड्स को उससे रिप्लेस कर दिया, टाइल्स ने रिप्लेस कर दिया रोड्स को। तो फिर अब उनको बस आप जहाँ पे भी कुछ ब्रेकेज वगैरह होता है तो सिंपल टाइल रिप्लेस कर देते हैं, पूरा उसको रिप्लेस नहीं कर पाता, वो थोड़ा मोर ड्यूरेबल है उसके मुकाबले। और बाकी ये सिली सी बात है, आपने रोमन एम्पायर की रोड्स देखी क्या? अभी भी चल रही है 1000 साल पुरानी रोड्स। तो रोड इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस पर इतना ज्यादा खर्चा किया जाए, ये खुद बना रहे सरकार हमारा basically. Yeah, so many roads built by the Maratha Confederacy in the entire Maharashtra still exist to this day. Yeah. So I love this question. If income tax is abolished, how will government get money? Is there a better form of taxes? टैक्सेस लेने क्यों, फंड रेज करो ना। आपको हॉस्पिटल खोलना है, करो फंड रेज, आपको स्कूल खोलना है, करो फंड रेज, किसने रोका है? पॉलिटिशियंस अपने लिए तो फंड रेज करते ही हैं। एग्जैक्टली और ये क्राउड फंडिंग थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, मगर वैसे भी हम कितने सारे चैरिटीज को देते हैं। मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास पूरा दिन चैरिटी में दे रहा है, अपर क्लास तो दे ही रहा है। हम भी अपने जस्ट आउट ऑफ द अच्छाई ऑफ आवर हार्ट्स वी आर डोनेटिंग ऑल द डे एनीवे। वी आर क्राउड फंडिंग इवन लाइक रॉक मेटल शोज एवरी नाउ एंड then how is it that impractical? Yeah, so the John Park is right, because see, at the end of the day, income tax, I mean, like in the sense that I'm agreeing with a different thing, in the sense income tax has to be abolished, because do you want us to look into your bank account every single minute of every single day? That kind of pressure is unbelievable. I bet a lot of the people here won't even tell their own family how much money they make, but the government will know everything about you. So abolish that damn thing. Yeah. Because of democracy, there is an incentive structure for crony capitalism, private player funding complain. So even if we become libertarian, it will again lead to big government. So how to resolve it? नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म सोशलिस्ट फिनोमेना है और लिबर्टेरियनिज्म का एसेंशियल। देखो हमने बताया ना आपको कि गवर्नमेंट का, अगर हम हम सारे लोग अगर इस नोशन पे एग्री कर जाते हैं ना कि भाई दोबारा एग्री कर जाते हैं, मैं अब वो नहीं बोलूंगा कि हम पहली बार एग्री कर रहे हैं इस चीज पे, हम हिस्ट्री में एग्री करते थे गवर्नमेंट की राजा का काम क्या था, बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या था। हम दोबारा ही उस नोशन पे वापस आ रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या है, नेता का काम क्या है। ही इज अ रेफरी, और रेफरी गेम में खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ये अगर पब्लिक इस बात पे दोबारा एग्री करना शुरू कर देती है इस प्रिंसिपल पे, अपने वापस गोल्डन टाइम में, अगर वापस गवर्नेंस के गोल्डन टाइम में वापस जाना शुरू करती है, तो हम फिर से वही स्टेट अटेन कर लेंगे और कोई फेवर्स वगैरह वाला सारा सिस्टम हट जाएगा। मगर अगर आप बात करो कि फेवर कहीं पे भी फेवर नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, हम तो यूटोपिया में आ गए, मजे हो गए, नहीं। फाइट फॉर लिबर्टी कंटिन्यूस रहेगी, कोई हमेशा फ्रॉड लोग निकल के आएंगे, ह्यूमन नेचर है। कुछ पहले से फ्रॉड होते हैं, कुछ फ्रॉड हो जाते हैं, हमारे पास सबके एग्जांपल है। तो फाइट फॉर लिबर्टी कंटिन्यूस रहेगी। पॉइंट ये है कि अगर वर्स्ट बंदा भी निकल के आ जाए तो उसका इम्पैक्ट उसके एरिया तक ही लिमिटेड रहे, और आपके पास चॉइस हो के या तो मैं उससे लड़ूं या मैं वहां से चला जाऊं। What people must remember is now you have more power than ever before. Like if you are being bugged by a thing, a simple portal to just lodge a complaint will launch a series of events against that person, because actually that person does not have any control over you anymore in a libertarian society, because your freedom, your concerns are more important to the government than anybody else. So you have a better chance, it's a work in progress, but you have a better chance and a much better probability of getting out of these kind of weird situations that you shouldn't be facing. What do you think of this argument that if let's say from the state side everyone has only a small domain of influence, therefore even if they are a bad person they can't really affect that much, but businesses need to get bigger, and unless there is a big businessman like Elon Musk and stuff there, then we won't be able to counter George Soros in the way that you were talking about.
But then if a businessman is in fact that big, and in fact, and at the end of the day, there is someone called a prime minister, even in a Libertarian Party of India run country, then won't that hypothetical Indian Elon Musk still have some room to do crony capitalism with the prime minister and do things for only his company and get away with it? Yeah, so one thing is about the decentralization, right? There are going to be a ton of rich businessmen. See, why do we need just one Elon Musk with that much amount of money here at the end of the day? Like, there can be plenty of people with a different level of cadre just contributing. And with the libertarian systems, you tend to grow equally to a certain extent. Certain innovations will overtake another innovation over time. Like, for example, even Tushar was telling the story about this basically theory about, how the millionaires and billionaires list in America keep changing. Bernard Arnold was on top at one time. Why? People probably thought handbags were the greatest technology and suitcases were the greatest technology ever, because that's probably what everybody needed to show up. Now somebody else took over, and then Warren Buffett has always been there in the top of the list because he has been making good investments. So now it is Elon Musk. Soon, who knows why an AI guy might overtake Elon Musk? You never know, because they are operating more like a free market than anywhere else. So if one person or one company is going to be there at the top for 30-40 years, basically means they have not taken any risks. And they are probably rent seekers. Think of it. If you take risks, you're not really going to be always on the top. And the top list at the end of the day really doesn't matter. It's just, like saying, okay, this guy scored 150 goals, but you still enjoy the goals that the other guys who just scored 50 scored, right? So at the end of the day, our economy will boom. Because of these decentralized systems, our economy will boom in various pockets, and we will see different people taking the helm at different times. Instead of just seeing this one name, I think in India everybody knows two names who are in the top. India will not be like that. India will be so moving up and down, up and down, pushing each other to achieve greater heights. So that is how we will. आप सब लोग जो भी स्ट्रीम में, अगर आप ग्रीक डेमोक्रेसी में पढ़ोगे तो उनको पता चलेगा कि उनके कितने उनकी जो असेंबली थी, पहले बात तो वो सिटी स्टेट थी। दूसरी बात, अगर आप उनकी उसमें पढ़ोगे कि असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो वो थाउजेंड्स, मेरे ख्याल से 5000 to 7000, मतलब कि 500,000 की सिटी में 5000 to 7000 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब 10:1 का रेशियो बन गया लगभग। तो ये बहुत ही ज्यादा, और हमारा तो कुछ और ही रेशियो है। तो आप समझ सकते हो कि अपना कितनी, और इलेक्शन साइकिल भी उनकी फास्टर थी, तो इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है लीडर्स की, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। This is a nice question. You can't just say Afuera. Explain the process. How will you tackle the political second order effects of removing women's reservation, at least in that context, or even the caste reservations? How will you handle that? पहली बात तो वुमेन रिजर्वेशन पहले भी नहीं थी, तो आगे उसको अफोर्ड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक रिजर्वेशन की, उसकी कास्ट रिजर्वेशन की बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइवेट सेक्टर ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करेंगे जब वो मतलब रिजर्वेशन को इररिलेवेंट करना पड़ेगा। आप सिंपल आगे ये नहीं कह सकते कि हमने आके उड़ा दिया उसको, खत्म बात, वो नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे। लोगों को फील होगा कि, लोगों को जब तक एक्चुअली फील होगा ना कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, तब तक इसको इंसेंटिव नहीं होगा उसको टू गेट रिड ऑफ इट। What about the reservations in the educational institutions, though, or not just caste? Even I don't think there's any women's reservation in educational institutions. Are there some? तो पॉइंट्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं, मगर रिजर्वेशन में काउंट नहीं होते। अच्छा, तो what about the reservation in educational institutions or government institutions? सारी टाइप की रिजर्वेशन इररिलेवेंट करनी पड़ेगी। आप उसको, जैसे मलेशिया का एग्जांपल दे रहे थे ना, कि जैसे मलेशिया ने इट मेड इट इररिलेवेंट, तो हमें भी इररिलेवेंट ही करना पड़ेगा, तब लोग फील करेंगे कि अच्छा चलो इसको उड़ा देते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि अभी जब तक जीरो सम मेंटालिटी है और लोगों को दिख रहा है कि मेरे पास इससे बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब तक ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। आपको प्रॉब्लम को सही डायग्नोज करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, और हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फ्री मार्केट में ही है। Yeah, I think what the previous question, can you just show me? Yeah, I think what Rishi is actually talking about makes a little bit of sense, because he's talking about some historical disadvantages we have, right? Like this has been happening
right now for a while, and it has been drilled into some of these things. I think that should be like kind of a transition period as well for certain aspects of these things. But at the end of the day, you'd like to sort of give people free reins on how it is, and we really feel that just the free market system alone will allow women entrepreneurs to just boom, because they've been waiting. Most of them, whenever I speak to them, even about like general things, they're scared. That is the only thing. We have to remove that fear of them starting their own entrepreneurships, businesses, and stuff like that. So it will be a combination of education, some transition period, to ensure that that economic disparity that is historical kind of, or whatever, that understanding of women that is historical kind of go away. Thoughts on an open border, keeping in mind the historical context? Neighboring countries are hostile towards a particular community. So how does that work? You all are not open border libertarians. So. No, see, this question also cannot be answered just like that. नेपाल के साथ हमारे साथ लगभग ओपन बॉर्डर है. जिन कंट्रीज का हमारे साथ कल्चर सिमिलर है उनके साथ ओपन बॉर्डर्स ठीक है. जिनके साथ जो हमारे लिए हॉस्टाइल है उनके लिए ओपन बॉर्डर्स क्यों होंगे? जो हॉस्टाइल कंट्रीज हैं जिसमें हॉस्टाइल एक्टर्स हैं जो कि लूनेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए हम ओपन बॉर्डर्स क्यों करेंगे? तो नहीं. Okay, I have a counter argument on the Nepal issue, because of Nepal being such an open border. Even last day some people were mentioning that now it's become a hub for a lot of smuggling. Then what do we do now? Stop the open border with Nepal as well? Again, the smuggling and all is kind of happening because of all these various factors of these existing socialist networks that are there. They are so deep rooted that it is very easy for people to infiltrate this route and all of that kind of stuff and all. If you are giving people the power, they can figure out better solutions to protect their borders. But this border issue, I also want to emphasize the fact that like we again, as libertarians, we set rules for our countries as well, just like every other libertarian government of the world. Like there are people who want to hurt us for the sins of our past, or whatever you want to call it, for the fights that we have picked. There are people who really, really want to hurt us. So this has to be taken with a little bit of pinch of salt. We cannot just go about saying, hey, we'll just open all borders. No. There are people who can use WMDs on us. They can take any different route and they can come and whatever it is. They don't have to come from one region. So yes, all these things, these are all historical issues which has to be taken account into how we do certain things. So the transition period should be there. But at the end of the day, we want everybody to be our friends. And contribute to the country's growth, and that is kind of where we are coming from. And as and when it requires, we have to shut down certain borders and open certain borders. There's nothing we can do until things are sorted. What is LPI's stance on meritocracy and technocracy? Will our government be able to become meritocratic and technocratic? कुछ म्युनिसिपैलिटीज की होंगी, कुछ की नहीं होंगी. Right. Please discuss policies to attract big tech to Kolkata. Easiest तो ये है कि पूरी सिटी को वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दो. Yes, like Fujairah, whatever, in Dubai, UAE, you have these economic zones, special economic zones. Open everything, open visas out, open everything you want. Cut all regulations. You're done. You're good. Yeah. How would you reconcile the werewolf mafia game theory against free market absolutism, assuming not all groups are going to be equally informed or organized at the start of this experiment? यार तुम क्यों एक मिनट की बात बताओ, जब आईपीएल शुरू हुआ था क्या सारी टीम्स इक्वली स्ट्रांग थी? या फिर जब फुटबॉल लीग शुरू होती हैं क्या सारी टीम्स इक्वली स्ट्रांग होती हैं? पॉइंट ये है कि आपको ये कंडीशंस क्रिएट करनी है कि वो बार-बार compete कर सकें. हम वो सिचुएशन इंश्योर करना चाहते हैं कि टीम्स बार-बार compete कर सकें. हम ये नहीं चाहते कि भाई एक ही टीम बार-बार जीते या सबको टीम को इक्वल चांस मिलना चाहिए. नहीं, हमने ये इंश्योर करना है कि उनको वो compete कर सके. वो उन पे है कि भाई उनको जीतना है नहीं जीतना, उनका कुछ और स्ट्रेटजी है. हमारा इंश्योर करना है कि ग्राउंड क्रिएट करें कि भाई हाँ ठीक है तुम compete कर सकते हो. और वैसे भी सबको जीतना भी नहीं है. Like the IPL or the English Premier Leagues operate, that it's not like the poorest teams or the teams which are never winning or probably will not win in the 50 years. It's not like they are going to go starve to death. They are making money. Their owners are also making money. So there's a completely elaborate and pretty feasible situation in those leagues anyway. और दूसरी बात, और डिसरप्शन हमेशा आती रहती है. अभी वो उसका
उसका क्लब का नाम क्या था जो जिसने वो मनी बॉल स्ट्रेटजी यूज करी थी यार, क्या नाम था उसका, इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही करी थी। या मनीबॉल, या बॉस्टन से, नो? नहीं फुटबॉल में करी थी यार उसका। ओह अच्छा प्लेयर उसका अभी अभी जीती थी वो 3-4 साल पहले, उसका क्या नाम था? अच्छा, आई डोंट नो। नहीं No, 3-4 which साल was पहले it? नहीं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुटबॉल टीम थी जिसने बिल्कुल मतलब कि क्वालिफाई किया था और फिर 2-3 साल में जीत भी गई। और ओह या Oh, sorry. Yeah. Vardy's team, उसके right? फिर प्लेयर्स भी काफी एक्सपेंसिव बिके थे। Yeah, Jamie Vardy's team, right? नहीं No, not Vardy. Okay. Okay, we'll Google it later. Someone will remind us anyway in the comment section. We all know that government is corrupt and inefficient. So even if we reduce it to only protecting life, liberty, etc., how will it be able to do even that with efficiency? तो वही तो बात है, वही तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोगों के लिए कि हम किस तरीके से एड्रेस करें इसको। तो वही हम म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन्स पे छोड़ेंगे कि आप किस तरीके से एड्रेस करना चाहते हो। आप इसको भी प्राइवेटाइज करना चाहते हो या आपको इलेक्शन डिपेंडेंट करना है। तो Yeah. हर कोई फ्री हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हमें क्या करना है। हमें फास्टर साइकिल चाहिए, हमें स्लोअर साइकिल चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म चाहिए। मतलब हमारे लीडर्स 10 ईयर्स के लिए इलेक्ट हो रहे हैं, मगर हम अभी तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हमारे लीडर कितने टाइम के लिए इलेक्ट हो। वो तो किसी ने ऊपर से बता रखा कि 5 साल के टर्म मिलेगा। किस बेसिस पे 5 साल का डिसाइड किया है? कोई लॉजिक है 5 साल का डिसाइड करने का? और 5 साल ही क्यों, 10 साल क्यों नहीं, 4.5 क्यों नहीं? Yeah. You all seem to support private education, but what about the syllabus? So I guess competition solves that anyway. Whichever syllabus you think is better for your kids, you send your kids to that school. It'll be decentralized also, no? So Yeah. it'll be, Yes. you know. मैं तो What do you think? आप ये सोच के देखो कि हम एज अ पार्टी चांस दे रहे हैं कि आपको किसी लीडर का वेट करने की जरूरत नहीं है आपको सर्विसेज डिलीवर करने के लिए। आप खुद ज्वाइन कर सकते हो कि भाई मेरे पास आइडियाज हैं, मेरी बात सुनो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, परसुएजन स्किल्स डेवलप करो, लोगों को अपनी विजन के लिए कन्विंस करो। हम वो सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं कि आपको हर बार इलेक्शन और वोटर्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको एक्चुअली जिस फील्ड में जाना है उसमें आप डायरेक्टली घुस सकते हो क्योंकि वो फ्री मार्केट है। आपको इस चीज में बिजनेस शुरू करना, आपको लोगों से एंगेज करना फ्रीली कर सकते हो, वॉलंटरीली कर सकते हो। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, किसी दूसरे बाहर वाले बंदे की जिसका ना कोई लेना ना देना। What is LPI's stance on LGBTQ plus movement? What do they think about gender affirming care, and at what age should it be provided to individuals? LGBTQ आपको प्राइवेट अफेयर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप उसको दूसरों पे इम्पोज कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसमें। गवर्नमेंट ना ही आपको किसी तरीके से गवर्नमेंट का फेवर मिला जाएगा, दिया जाएगा। और व्हाट एज शुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स, ये पेरेंट्स के ऊपर है। तो ये पेरेंट्स के ऊपर है जब तक वो बच्चे हैं। उसके बाद वो एडल्ट के ऊपर है कि उसको एडल्टहुड हम वैसे 18-21 के बीच में ही मानते, तो तब वो इंडिविजुअल खुद पे है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है उसमें, पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं है उसमें। Right. What USA got wrong was they were sending parents to jail or taking away their kids if the parents didn't agree with their idea of transitioning. That's the problem. This is a nice, funny, interesting question. When will we see the libertarians realistically even beginning to contest elections in India? Delhi specifically. He's from Delhi, I guess. दिल्ली का नंबर तो लेट पड़ेगा, 2030 में पड़ेगा। 2027 का टारगेट है हमारा पंजाब से। अच्छा. Do you all support Indic languages as medium of instruction in a libertarian government? I'm a minarchist, but I won't compromise Indic languages for global language. Again, decentralized. It is your choice. It is your community choice. Yes. Do whatever you feel like. You're free now. You're freedom. You just do it. और लिटरेचर पर्पसेस के लिए इंडिक लैंग्वेजेस मतलब मदर टंग का तो क्या ही वो हो सकता। तो ऐसी कुछ वही तो बात है। अभी मैं तो इस बात में आर्ग्यू करूंगा कि इस सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। आप फ्री मार्केट होती तो आप अपनी लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बना के जैसे एक्सर्ट कर पाते बाहर। अगर अभी फ्री मार्केट नहीं है तो फिर why was Bengali a very important and relevant subject in the yesteryears and it's not so today? Because Bengal's economy has got fucked. Yes. No one needs to learn it to survive. Language emotions alone can't save the language. Yeah, I mean, and in an urban town like certain cities like Pune, you better know 5-6 different languages. So in this case, you have all of them in the curriculum if you want, because it will help you with whatever. But
You know, Yes. it really depends on what you want. If you're okay with one Yes. language, go ahead with it. I mean, like, we don't Yeah. have any problem as long as communication skill really does not depend on language at the end of the day. You should Right. be able And to especially with AI, there's going to be immediate translations and stuff available pretty soon. Yes. How और will you अभी fix हमने judicial? वो Go on. कन्वर्सेशन तो हमने शुरू भी नहीं करी है, जो नई लैंग्वेजेस निकल के आ रही हैं, जैसे क्लिंगन होगी या फिर डोथराकी होगी. Speak whatever you want. तो नहीं, सोच के देखो यूएसए की कितनी कमाल है कि वहां पे अगर आप मास्टर थीसिस वगैरह कर सकते हो इन लैंग्वेजेस में. यहाँ पे कोई सोच भी सकता है इस बारे में कि मूवी में कोई लैंग्वेज इन्वेंट होगी, उसके बाद कॉलेजेस में उसमें मास्टर्स कर पाओगे आप. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का कमाल है. Yeah. How will you fix judicial backlog? रिपीट कर चुके हैं वैसे. सिविक केसेस प्राइवेट आर्बिट्रेशन से करेंगे. Right. This is a philosophical question. Is equality possible? If not, then why? Equality of what? इक्वालिटी बिफोर लॉ पॉसिबल. इक्वालिटी मैथमेटिकल या फिर अपना जो सोशलिस्ट प्रमोट करते हैं नॉट पॉसिबल. If equality is possible only if somebody else does not tell you what to do. It's as simple as that. Right. If somebody is there telling you what to do, और दूसरी बात, you're not going to be equal. और दूसरी बात ये, क्या इक्वालिटी असली में डिजायरेबल है? आप चाहते हो कि भाई अगर किसी बंदे के पास कम एबिलिटी है आपसे, उसको इक्वल चीज मिले, उसको आपको इक्वल ट्रीट किया जाए जो आपसे कम एबिलिटी में, या जो आपसे ज्यादा एबिलिटी में आप चाहते हो आपको उसके बराबर ट्रीट किया जाए, मतलब कि आप विराट कोहली और आपको इक्वल माना जाए, आप ये चाहते हो? Yeah. How do you deal with externalities, or do you come from the view there are no such things? Externality as in economic externalities, unintended consequences, and bad stuff that come out of your behaviors, or stuff that can't be solved by your business, etc. At the end of the day, we are referees. So, at the end of the day, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स पे वो है. हमने ये नहीं कहा कि भाई ये परफेक्ट सोल्यूशन है. अब इस पे डिपेंड होगा, अब सिचुएशन टर्म वाइज होगा कि आप किस पर्टिकुलर सिचुएशन की एक्सटर्नैलिटी की बात कर रहे हो. तो डिस्कशन होगी उसके बारे में अलग अलग एरियाज के हिसाब से. एक्सटर्नलिटीज का डेफिनेशन तो गूगल में है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी व्हिच अफेक्ट्स अदर पार्टीज. This we kind of got into the Trott's law and stuff, without this being reflected in the Trott's law. Reflected in market prices, such as the pollination of surrounding crops by bees kept for honey. Yeah, so this was kind of answered in the other, like pollution, for example, air quality, and all of that. So it's a very similar thing. That's kind of how we will deal with this. LPI stands on promoting scientific thinking and control on top institutions like IITs and other such top research institutions. Not the role of the government. Role of government का रोल नहीं है इसमें सोसाइटी का रोल है. और नेचुरली जब फ्री मार्केट होगी तो लोग साइंस और इनोवेशन में ज्यादा प्रेफर करेंगे. जब सोशलिज्म होगा तो लोग हीरोवर्शिप वगैरह उसमें ज्यादा जाएंगे. At the end of the day, your degree never gets you a job. It is you who gets you a job. So you better learn whatever it is you're supposed to learn, and these private organizations will crop up to ensure that you get what you want to survive in whatever environment is created at that time. Right. Harshmani, this question to be kind of answered. Best would be declaring entire Kolkata NACZ. Then, do you all think privatization would, in a way, help in bringing civic sense to Indians? Like people would stop spitting on places which are managed by private persons and government property. 100%. Like which, I mean, like you look at the societies. Yeah. इसमें स्पेकुलेशन की क्या जरूरत है? आपने कितने लोगों को मॉल्स में थूकते हुए देखा है? Malls are such a great example of libertarian governance. That's governance only. Yeah. I mean, you look at these societies, private societies that are there. You're not going to find anything like this anywhere in those places. So I mean, they find you. Simple. Yeah, this is an interesting question. Yeah, go on. आप लोगों के बिहेवियर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो कि ये जानबूझ के गंदगी फैलाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. वो बस वो देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं. तो इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कि ओहो क्लीनलीनेस कैसे आएगी. We don't want our own military industrial complex who then therefore say that let's get to that war, or fund studies that show that we need to go to that war, or fund think tanks like that so that their weapons can be sold. So what about weapons manufacturing in a libertarian government?
अभी जो हमारे पास सिस्टम है उसने क्या जबरदस्त काम कर दिया है। आप जो अगर ठीक है, अभी अगर ऑल्टरनेटिव की बात करें तो अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो बढ़िया है, अभी हम सेफ हैं हमारे कॉम्पिटिटर से। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये ट्रेड ऑफ वर्थ इट है। अब चलो मान लिया यूएस में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हाँ मान लिया, हाँ वो बुरी Yeah. चीज है, मगर कम से कम Yeah. लोग अवेयर तो हैं कि उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमें तो फ्रांस रशिया इन जैसे कंट्री पे तो डिपेंडेंट होना पड़ता है अपनी वेपन्स के लिए। टर्की जो हमारा मतलब पिछले 20 साल से उसने कुछ पॉजिटिव नहीं बोला जिस हमारी कंट्री के बारे में, उस पर हमें ड्रोन्स के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो सोच के देखो कि क्या ये बेइज्जती सहना वर्थ इट है, सिर्फ Yeah. इस चक्कर में कि भाई नहीं ये मेरे से 10 रुपए ज्यादा कमा लेगा। Yeah, but also US got aware of their military industrial complex only after doing wars all over the world from the Vietnam War and stuff. तो मतलब 50 साल लग गए वो समझने के लिए। तो अब उस मैं वही हिस्टोरिकल कह रहा हूँ प्रेसिडेंस की कि वजह से एक अवेयरनेस हो सकता है इंडिया में। मैं वही कह रहा हूँ कि लिबर्टेरियन सिस्टम ऐसा नहीं होगी भाई ओहो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ओहो दुनिया बिल्कुल आइडियल होगी, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो गया। मूविंग Right. टारगेट्स हमेशा रहेंगे आपको, मगर Right. आपको ये बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल कन्विक्शन होनी चाहिए कि मेरी इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। Abhishek Kapoor, I'll answer this question. This is not a Libertarian Party question, really. They fall into leftist trap of cancel culture because they think that अब हमारा time है, अब हम मारेंगे, इसलिए. Do you all support abolition of central bank? Private money sounds very big concept for my limited brain. Yeah, all these central banking systems and all have to be. You need to tell them to go bye-bye and Okay. focus on decentralized systems. Yeah. इवेंचुअली सारे उसको इम्बैलेंसेस को ओवरकम करने के बाद अर्जेंटीना देखना, जब अर्जेंटीना जब जिस तरीके से हटाएगा ना सेंट्रल बैंक को, उस तरीके से देखना, मतलब हमारा भी सिमिलर सही मॉडल होगा कि आपको पहले करेक्शंस को रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप चीजें ठीक करते हो। अच्छा ये तो हो गया, ये इंसेंटिव्स भी हो गया। अच्छा ये तो फेवरेट क्वेश्चंस है लिबर्टेरियंस का। Do you believe in privatized militia for the homeland security and defense overall? यस, Totally. मगर क्वेश्चन ये है कि आप क्या आप अपनी कंट्री के आर्मी मैन को ट्रस्ट करते हो कि वो प्राइवेट मिलिशिया में मिसबिहेव करेंगे? क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए कि आपका आर्मी मैन पे कितना ट्रस्ट है। The beauty of this is that we are referees, so they cannot go against, and it's much more safer with this kind of a setup than it is with having a government power actually control all of this. वही तो बात है कि आप अपना उसको प्राइवेट मिलिशिया, मगर अगर आप ये बात करो प्राइवेट मिलिशिया के पास न्यूक्स होने चाहिए, नहीं। Right. Here we have a very nice question. Do you believe that women should be conscripted in times of war? If it may be for non-combat function, even then should be conscripted. Like अगर war time है, सबको males को conscript कर ही रहे हैं, तो women को भी conscript कर देना चाहिए क्या? Whatever is necessary to win, gender is irrelevant. Hopefully with the libertarian system we'll make more friends than enemies, but at the end of the day, yeah, it has to be equal. War का गोल है उसको जीतना, तो उसमें जेंडर कहाँ से आ We have to win. Right. But then we can't go the US route again and decrease the kind of qualifications needed for a woman to get in just because we want to show that women are getting into the army. This question requires transition time. देखो सिंपल सा पॉइंट ये है कि आप जीतना चाहते हो या आप कुछ पॉइंट्स स्कोर करना चाहते हो, आप पॉइंट स्कोर करके तो क्या फायदा उसका? Yeah. I'll take this question. Lack of centralization of defense, which led to successful invasions, yes, but अगर कोई स्टेट स्ट्रक्चर ही नहीं है सेंट्रलाइज, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिफेंस तो ऐसा है, वो मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकली एप्लीकेबल ही नहीं है. वी वर नॉट अ सेंट्रलाइज स्टेट as yet, but the individual kingdoms, they were functioning really well. And then the attack came from united people who wanted to fight with all these people, and then some betrayed each other, etc. So now we have a central, at least country, nation state. We don't have to worry about that problem anymore. So we are not talking about breaking up the entire country. Look at even from the tactical standpoint of a decentralized system. You cannot just think, oh, I know this entire system and come and attack. No, you come here to the next border, you will face an entirely different set of opposition, terrains, whatever it is. It's not, it's a centralized system can be very detrimental. Right. He's saying Hindu Mahasabha,
constitution was almost identical to libertarianism principles. Yes, except the private firms and stuff. That's where Savarkar disagreed. He said that the government must run those businesses, but he believed so much in prosperity that he said that if the business itself is going to hell because of workers' demands, then the workers will have to submit to the demands of the company. So, in a Savarkarite country, businesses after businesses would not go to bankruptcy like in West Bengal just because the workers demanded. That's the weird Savarkarite socialism. But on everything else, so yes, Hindu Mahasabha almost is libertarian. How are you going to fight a gang of goons despite having gun? Imagine you are a business owner and a gang of 10 goons at your doorstep are asking for wasuli. The business owner has his own security guards. He has to have an army of security guards if he knows that he's running a business in Bengal. No, Yes, I mean with gun rights, Yeah, you go will on. have a gun. You will have. No, he's saying that you can't fight off 10 goons with one gun in that sense. Oh, okay. So you'll have your If own. you are तो फिर आप attracting हायर तो कर सकते हो goons, किसी you will have a को. security. Yeah, you need private security contractors of large numbers to protect your business. That's how it happens anyway. That's अभी what मैं actually वही कह रहा is हूँ the कि ये protection वसूली money. वाला सिस्टम इसी वजह से एग्जिस्ट करता है क्योंकि फिर अभी आपको डिपेंड करना पड़ता है पुलिस पे अपनी सिक्योरिटी के लिए. अब आप Yeah, उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर लो. आप नहीं हायर कर yeah. सकते हो, 10 लोग मिलकर हायर कर सकते हैं, 10 नहीं तो 20 जो लोग पैसे मिलकर हायर कर सकते हैं. जो पैसे तुम हफ्ता वसूली वालों को दे रहे हो, उसी पैसे से तुमको प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर लेना है. There's no difference. We have to acknowledge that centralization creates scale. It is the one thing that we sucked at the. Yeah, that's why I answered. We don't have that problem anymore. There is a very good YouTube video by a channel called Crowd. Okay. What incentives will you create for invest? ये तो हो गया. How do we decentralize when the whole world will centralize to some degree? They are decentralizing now. Yeah. वर्ड सेंट्रलाइज कैसे करेगा? Web3 मूवमेंट के बारे में पढ़ देंगे आप. Yeah. I think Millet has opened a whole new can of worms. Everybody is looking at this kind of a system. Does demography matter for you guys while framing policy? Like who is from what religion and caste and stuff? No, not in the least. Because but- everybody is equal. Yeah, go on. No, because everybody is treated equally. There's no reason to Right. check these unless we are a sales company trying to sell some product to people. We don't Yeah. have to. No one is going to Bihar. That's why incentives are there. If you don't plan to incentivize, how will you make sure backward states get developed? Because they are dragging the whole country down. See, थोड़ा Bihar रिफ्रेश कर also- सकते हैं ना? समझ में नहीं आया क्वेश्चन. Repeat yourself once, Tushar. अगर वो रिफ्रेश कर सकते हो, मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंड समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है. Yeah, this is probably a continuation of some other sentence that he said. Wait, let me check out. No, Slovenian he's basically talking about the fact that like Bihar does not have that supply or the demand yet. So Yeah. if Yeah, you which we don't were discussing in the incentivize beginning. them, Yes. like, because they are dragging the whole country down. At the end of the day, why are they in this position in the first place is the main thing. They are in the first place. They are in this position only because they are not allowed to grow by these forces that are around them. Remove those forces, and everything will back to normal. Do Libertarian Party believe in indoctrination of studies and systems like Congress did with Kachin Parikshas, like in the case of IAS and stuff, or UPSC syllabus and stuff? No, not really. Let the community decide what level that they want to go at. सीधी सी बात है, अगर आप रियलिटी के साथ डील करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, आप रियलिटी से दूर रहोगे तो आप फेल होगे. तो आप फेक फैक्ट, फेक नैरेटिव जितने मर्जी बनाए जाओ, अगर रियलिटी के साथ वो फिट नहीं बैठेंगे तो आप फेल ही होगे. तो Ultimately, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें. Ultimately, the private organizations are the ones that will decide this because they will want a specific kind of skills and stuff like that, and also the industry will dictate how the education system is going to be. Yeah, this is a nice question because after all, institutions have their own interests as well. So government will have its own interest, and they won't be totally not able to interfere in private matters. I disagree. वो पढ़ो आप eminent अरुण शौरी बुक eminent historians. उसमें It's a पता good चलेगा thing. कि बंगाल में Because शुद्ध करके क्या उड़ाया था कम्युनिस्ट में. Yeah, this is a different question. This is not on the basis of what you just said. Right.
this But is a see, completely different question. Yeah, at the end of the day, it's a good thing that now the government, like a libertarian government, is not going to be comprised of politicians per se, right? So our goals are completely different. It's not about just talking and getting votes here. It's about doing and showing results. And, we don't have other interests other than your individual liberty and pushing you, because when you grow, automatically we grow. That is the only way we can. We are not and everybody should grow. That is the only way, because there are going to be no income taxes. There are going to be no exorbitant taxes. The only way we can grow is if everybody grows. मेरा जो भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं ना, मेरा उनसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अभी आपको हम लेट्स अज्यूम आपको हम पे या किसी पॉलिटिशियन पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनके पास आप सोचते हो कि आपके पास सॉल्यूशंस है और आप उनके बारे में कुछ करना चाहते हो. आप हमारे पे डिपेंडेंट हो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. हम कुछ हमारी वो प्रायोरिटी होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे. हमारी वो प्रायोरिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम लटकती रहेगी. हम वो सिस्टम हम इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज आपके काम को रोक के रखती है. तो हम ये सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज की वजह से आपका काम ना रुके, या जिन कॉजेज में आप बिलीव करते हो वो ना अटके रहें. आप एजुकेशन में बिलीव करते हो तो हम सिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं कि आपके पास फ्रीडम है कि आप एजुकेशन फ्रंट पे कुछ करना चाहते हो आप कर सको. आप कल्चरल फ्रंट पे कुछ करना चाहते हो आप कर सको. आपको कम्युनिटी के लिए काम करना तो आप कर सको. मगर अगर आप नहीं कर सकते, आपको किसी चैनल से जाना पड़ता है जिसमें कोई बंदा जिसका ना कोई लेना ना देना और उसको बस आपसे पैसे खाने, वो डिसाइड करता है कि आप इस चीज में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते. हमारा आइडिया ये है कि नहीं, वो बंदा इररिलेवेंट है, वो टाइम गया, अब आप फ्री हो, अब आप खुद से कर सकते हो. ये नहीं होगा कि भाई चीजें आइडियल होंगी, आपको फिर भी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, मगर ये जो स्टूपिड लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा ना, वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. Do you think judicial review is a form of government overreach and should it be stopped? नहीं. लेजिस्लेचर जुडिशरी का जो रोल है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बैलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, बैलेंस ऑफ पावर के लिए एसेंशियल है. Where are nationalism and libertarianism convergent and where are they divergent? Good question. Nationalism and libertarianism convergent है अगर if they believe in the good of the people that reside in a particular geography, और divergent है अगर politicians start abusing this sentiment to attain their own goals, like dictators dictator wars चला रहे हैं अपना उसके लिए, अपने popularity gain करने के लिए. I think libertarianism is perfect for nationalism because every Indian matters, not just a group, not just a small thing here, not just a large group there. Every Indian matters, and India will matter because every Indian matters. So yes, this is a nice question and an age-old debate. I think that if we don't spy on ourselves at all, if we have complete privacy, how will we know the next guy who's planning an attack? Private? Sorry? Go on. Each individual unit now, in terms of the decentralization, is going to be very self-aware of the situation around us. No longer are people and communities going to be sitting there and looking for, some hallelujah solution from up above. So everybody around these areas are going to be self-aware. Spies and things like that in these kind of systems, they're going to find it really hard. Reporting structures will be there. So it's kind of much easier for us to pinpoint issues and things like that. And these spies cannot hide amongst a mass or a group of people you call, a certain sect of people. They cannot just hide there because these sects will be again decentralized into different areas. So at the end of the day, it's harder for them to hide. और दूसरी बात ये प्रॉब्लम स्पाइंग में नहीं है, प्रॉब्लम गवर्नमेंट स्पाइंग में है. स्पाइंग तो एसेंशियल है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन तो एसेंशियल है. प्रॉब्लम गवर्नमेंट स्पाइंग में है और प्राइवेट और आपकी प्रोटेक्शन की जहां तक बात है, तो अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेट्स अज्यूम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व होगी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. बट आपकी सिक्योरिटी के लिए आप कितना पे करोगे? अभी आप गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटी के लिए तो पे कर रहे हो. हाँ, तो but at the end of the day, whether it's private companies or the government, someone will have to end up spying, right? Whether even it's in a decentralized manner, because we hope that we know the SMS and texts of the terrorists planning to do the attack. So where do we put a stop to that, or where's the line to draw? गवर्नमेंट आप बेवकूफ में आ रहे हैं कि भाई हम आपकी बेस्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं.
no. But what of the case that where and actually a guy is planning this? Like let's say today I'm radicalized and I want to do some harm and I'm planning and I have some channels. Unless government is looking at my text, what do? Like what used to happen with the previous Congress governments up until 2014 when terrorist attacks were the order of the day. They stopped because of this lack of privacy, right? मैं बताता There was more surveillance and stuff. लिबर्टेरियन सिस्टम में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनीज विल बी लायबल फॉर योर सिक्योरिटी, ठीक है? क्योंकि उनको अगर आपके साथ कुछ होगा तो उनको पे अप करना पड़ेगा ना, तो बस उनके पास नेचुरली इंसेंटिव है टू एंश्योर योर सेफ्टी। तो होगा क्या कि इंश्योरेंस कंपनीज विल बी इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट विल इंश्योर दैट यू आर सेफ, ठीक है? तो फिर उन्हीं कंपनीज में फिर एक साइबर सिक्योरिटी कंपनीज भी आएंगी, तो फिर वो भी ट्रैक रखेंगे एक एरिया कि भाई इसमें यहाँ पे कुछ इस टाइप के पैटर्न निकल के तो नहीं आ रही, इस टाइप के सर्च रिजल्ट तो निकल के आ रहे। मतलब मैं लूजली बात कर रहा हूँ, अब डिटेल में जाना हो तो इंटेलिजेंस वाले बेटर बता सकते हैं, मगर पैटर्न निकल के आते हैं फिर भी क्लस्टर से कि इस एरिया में अगर सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है, एल्गोरिथम वगैरह से रफली ट्रैक किया जा सकता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। मगर वो काम अगर आप उस पे गवर्नमेंट एजेंसीज पे छोड़ रहे हो तो फिर आप एक उस अथॉरिटी पे छोड़ रहे हो जिसके पास मोनोपोली ऑन वायलेंस है। और दूसरी बात ये, क्योंकि उसके पास मोनोपोली है तो फिर वो उसके पास कस्टमर सिर्फ उसी के पास जा सकते हैं, तो उसके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक एरिया में तो वो इग्नोर कर रहे हैं उन मैसेजेस को और दूसरा एरिया जिसमें उसका इंटरेस्ट है वहां पे उसका फोकस कर रहा है। तो ऐसा होगा कि जिस रीजन में उस पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट का इंटरेस्ट नहीं है वहां पे ये एक्टिविटी वैसे कितनी ही होती रहे उसको वो इग्नोर करेंगे, और जिस रीजन में उनका फोकस है उसमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पॉइंट ये है कि भाई जिस रीजन में उनका फोकस नहीं है वो वाला एरिया तो गया, मगर अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए तो सारे कस्टमर इंपॉर्टेंट है ना। उनका ये नहीं हो सकता ना कि उनको तो जैसे अब टेलीकॉम कंपनीज है उनके लिए एक एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है, उनको पता है कि भाई एक भी कस्टमर चला जाए तो हमारे बहुत सारा रेवेन्यू का नुकसान हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि ये मेरे बेटर ये कंपनी बेटर टेक केयर कर सकती है, मैं इनके पास चला जाता हूँ, तो उससे फिर एक सिस्टम बन सकता है। आपको अगर आपको सिंपल टर्म्स बात करने की कि अगर मेरी गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, पर गवर्नमेंट नहीं होगी तो इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, राइट। और देन कस्टमर रीअक्वायर करने में तो और भी ज्यादा पैसा चला जाता है, सो दे विल मेक श्योर दे डोंट लूज कस्टमर्स। Yes. Don't you think with adversaries like China, Pakistan, Bangladesh, etc. in our neighborhood, unlike countries like Switzerland who don't have that many enemies around them, libertarianism will not work to that extent? Therefore, because we have crazy neighbors and Switzerland doesn't have crazy neighbors. आपने एक दो लीडर के बारे में सुना होगा, मुसोलिनी और हिटलर, वो उनके वो स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे थे, तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड The reason they are so rich right now is because of crazy neighbors, but where they excelled is they knew how to do business. Simple. Yeah. That is why they are still there, and that's kind of what we want to be. We want to be a great place to do business. Yeah. How will you remove the entrenched people who benefit out of the current system, meaning our version of Doge then? नहीं कर सकते, बस ये तरीका है कि जो सिस्टम से बाहर है उनको अपॉर्चुनिटी मिले और you widen the pie. Yeah. This is a nice question. How will you tackle caste discrimination? Will you leave it up to independent social reformers or enact social programs, change narrative around reservation? I know it's none of these answers, we won't but do anything. Go ahead and yeah. They will pick up on their own, because there's nobody discriminating against them anymore. How much will they discriminate? Everything in a decentralized system. Yeah. In cities, where does discrimination occur? How will they occur when you need the best guy for your job who works at the cheapest prices, cheapest fees? दूसरी बात ये, most of the caste discrimination will disappear with the urbanization and industrialization. ये Japan best example है, Japan में भी caste discrimination थी, country developed and then Samurai, ninja. Yeah. Okay. Mystery sociologist has something to say to the audience. Interesting. No, I want to tell you all that some of the questions you guys are asking is sorry, yeah, but I am under a completely capitalist system now, so still better than before. Anyway, so having said that, I think some of the questions we're going for are like really far-fetched. When I said that we have to also stop thinking local, I was also saying, in a way that when we scale our thought, it does not need to always go at the border, treason, defense spending, all that. I think what we are trying to do is perhaps
talk about certain ideas that impact you on a daily basis. Okay, Yeah. whether it's your dirty roads, whether it's your, you know, whatever hafta wasuli form of stuff you have to do, income taxes, Yeah. all Yeah. that, perhaps Yeah. education, for example. So Yeah. the rest comes on its own. For example, Yes. when we're talking about invasions, the only reason Hindu dharma survived was because of its decentralized structure. Because Yeah. if they took over that one throne in the center, Yeah. in every It village did there not were matter. Brahmins. Yeah. Exactly, there were Brahmins and temples who survived. Yeah. So they could not Yeah. take over everything. In fact, once the Yeah. Mughal Empire realized that these guys are rich, they just had that kind of understanding ki bhai tu rakh le apna jagah, you pay me Yes. some taxes, which is why Yes. they didn't go into every village and kill everyone and take the stuff, right? Yeah. So decentralization saved Yes. Hindustan, so to speak. Yes. Okay. Yeah. In fact, whenever there was centralization, there was more, problems. Yeah. Number one, with regards to Yeah. that. Number two is perhaps, you know, the education system, people are not understanding. People think that, you know, whatever the government teaches, people learn that. That's the biggest flaw in our, like, whatever my experience in the education system has taught me that people. So, for example, right now we have a government funded education system, right? Where IITs and all are funded. People aren't going into engineering right now. Engineering is Yeah. a losing cause right now. So your Yeah. taxpayer rupees are being wasted on a subject that does not necessarily produce as many jobs as it used Yeah. to. Yes. So your paisa is being wasted. Yeah. Rather, and more importantly, your when you teach someone something, it's not necessary that will stick to their head. Most of people Yeah. learn to respect and love your country, but then they go to some college and, you know, they learn some stupid ideas and all that. So it Yeah. does not matter how you teach them. The best way to teach people, you can't teach someone to love your country. You have to uphold it as an example for them to follow, and that will happen when you have faith in your country's wealth and power. Okay. Yeah. When you are proud of your identity, and you are proud only when you Right. have some kind of backing and paisa and power. Paisa is equal to Yeah. power. You don't need to tell the richest people who are, let's say, a Dubai person, right? Yeah. If you don't need to tell them to love their country. I'm sure, you know, they have more Right. Right. love for their country than people in our country. And I'm not Yeah. criminalizing our people. I'm just saying you can't teach these values. They have to be Fair enough. incentivized. And that Right. is why a textbook approach to anything does not work. At least in the education system, it does not work. Yeah. So anyway, that was my two bits on this issue. Yeah. One thing Thank about Christoph, what you said actually struck me a little bit, in the sense that, you know, the questions that came today, it's almost you know, like somebody else's problem-based questions. You know, I would have also liked it if people were like, hey, you know what, in my neighborhood, you know, I'm facing a problem with bribery, and here is what happened to me. You know, Right. and these kind of questions will apply to you and your community a lot more than you think. Instead of, you know, all these questions about borders and all that, you know, Yeah. what are you going through is kind Yeah. of Yes. what it is. Are you happy right now? Are you free right now? Then you shouldn't be on this podcast. You know, Right. what is it that is bugging you as an individual is kind of what I'd like to really know. I'd like to know the people who are asking Yeah. the questions a little personally. Yeah. So if you can get them in the studio next time and ask audio-based questions, Yeah. nothing like it. How will you allocate scarce resources which have multiple benefits in an efficient way? I mean, Again, like, we aren't central planners, so it's up to the free market economy to decide what these are. the Right. supply and Okay. demand is controlled there. It's not controlled by us. Yeah. Rishabh is impressed. Crowdfunding for infra as opposed to taxes is a brilliant idea. Love it. What will happen to RBI? Slowly. I mean, they'll have to be gone. Happen, yeah, get rid of it or yeah. Yeah, I mean, like, How will Libertarian Party manage the sacred places sanctity like VIP culture and helicopters to Char Dham, disturbing the essence of that place? How are they going to protect it? Now government is exploiting it fully.
आपने क्वेश्चन खुद ही आंसर कर दिया। जब गवर्नमेंट उसको संभाल नहीं सकती तो ऑटोमेटिकली पॉइंट किया कि वे Yeah. कि गवर्नमेंट टेम्पल अथॉरिटीज को कंप्लेन करो कि भाई ये क्या है, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई बीच में? Yes. This is a nice question. Let's say there is one major businessman who is using force to stop his competitors from growing. How do you tackle them? Preventing cartelization. कार्टलाइजेशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से होती है, और कभी भी एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं हुआ है कि नेचुरल कार्टलाइजेशन इमर्ज होगी, हमेशा उसमें कुछ गवर्नमेंट बैकिंग होती है। तो हाँ, और दूसरी बात वो है कि आईपी लॉज भी कार्टलाइजेशन क्रिएट करते हैं, और आईपी लॉज को लूजन अप करने की जरूरत है। और This, yeah, go on, Anup. Yeah, so basically, not a lot of these questions I feel are starting to get a little repetitive. So I just want to tell people, like, how do you figure out an answer to a libertarian question, right? Okay, so for example, about the LGBTQ problem, you ask yourself these questions: Does it harm me? Yes or no? Right? That's the first question. Does it harm me? Does it hinder my right? Yes or no? Right? Does it hinder my right to property? Yes or no? Does it harm my right to freedom? Yes or no? If all the answers to this is no, no problem. We've got no problem with that. You can go ahead. If the answer to any one of these questions, like, does it harm me, and it says yes, then that is where we come in. That is where like, we will kind of start to understand, okay, do you need state funding for this at any stage? But if it doesn't harm you, your right to life, your right to property, your right to freedom, you're good. Go ahead, and nothing will stop. This is a very interesting criticism that he's saying that libertarianism can work only if India becomes a monoculture and a high trust society, which India is not. Otherwise, it's their ideas will fail. Once again, unless India becomes a monoculture, where are we ever going to be a monoculture? We can never be a monoculture. Yeah, he's saying therefore libertarianism won't work, since we are not a monoculture and a high trust society. Because we are so different is why libertarianism will work better, because an individual That's my hunch. matter more. Like, you could have और 500 दूसरी different बात things from the guy. और दूसरी बात ये लो ट्रस्ट सोसाइटी एक टेक प्रॉब्लम है, उस पे हम एक सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है पीपल्स ट्रस्ट रजिस्टर। तो बेसिकली इट्स अ ट्रू कॉलर ऊबर सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन फॉर बिजनेस सिस्टम। मतलब बेसिकली अगर हमारा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप मेरी बिजनेस हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो कि इसने क्या किया है, और मैं आपकी बिजनेस हिस्ट्री ट्रैक कर सकता हूँ इसने क्या किया है। तो एक थर्ड पार्टी रजिस्टर हो जो हमारी सारी बिजनेस हिस्ट्री का ट्रैक रखे, तो ट्रस्ट की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। और इसमें ये भी है कि बिजनेसेस कस्टमर्स को भी रेट कर सकते हैं, और कस्टमर्स बिजनेसेस को भी रेट कर सकते हैं। तो बेसिक बात ये है कि ये टेक प्रॉब्लम है, ये कोई सोसाइटी की ऐसी कोई नेचर ऑफ सोसाइटी ऐसा कुछ नहीं। Blockchain that also, and we are good to go. Right. This is also an interesting question or a point to make, that Malaysia is an Islamic state. They have priority reservations for Muslims, but even then it's a prosperous state. So then what do we do about that, Tushar? Yeah, but if somebody रिजर्वेशन there बात हो रही wants है कि रिजर्वेशन बात हो रही है, मलेज की जो रिजर्वेशन थी चाइनीज, क्योंकि चाइनीज डोमिनेट कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम वगैरह को, तो मलेज को रिजर्वेशन मिल रही है, उसकी बात हो रही थी। the अपनी whole फैक्ट idea थोड़ी is ठीक करें। if any one member of that population wants to do something else, they can't. So how is that? It's a matter of perspective, right? I mean, they are taking everybody as one, but don't you think at least यार आप 5 दो अलग अलग चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई अपना उन्होंने अपनी रिजर्वेशन हटाई है अपना उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, और आप कह रहे हो कि ये रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेट ओपनली। मैंने कब कहा? मैंने ये कहा कि दे हैव रिड्यूस्ड रिजर्वेशंस। किस वजह से? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज कर गए। फालतू की बातें मत करो, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे दूसरों पर। Right. So blatant reservations, etc. Let's see. Okay. No, I mean, more questions on Malaysia. What is this issue right now? These are kind of guys I want to talk That Malaysia has not gotten rid of. It's not really treating the individual as an individual, because they still have some reservations. Yes. तो मेरा पॉइंट ये था यार कि रिजर्वेशन को उन्होंने इररिलेवेंट किया है। मैंने ये कहा कि उन्होंने उड़ा दी। मैं बता रहा हूँ कि उनका मेथड जो उन्होंने सिमिलर मेथड है कि रिजर्वेशन को इररिलेवेंट करो, प्राइवेट सेक्टर में ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करके, वहां पे मलेशिया खत्म हो जाता है। एग्जांपल, अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो आपका फॉल्ट है।
And so many people are emigrating to Malaysia from India, not the other way around. Why is that then? If it's just pro-Muslim reservation. What about human trafficking? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिविजुअल लिबर्टी पे थ्रेट है कि नहीं? अनूप सर ने जो टेस्ट दिया 4 क्वेश्चन उसको टेस्ट करके देख लो. Exactly. Yeah. Yeah, like yeah, I'm taking that 4 question test. Yeah, I'll So, run that by you. Does it harm me? That's the first question. Does it Yeah. hinder my rights? Does it Yeah. harm my right to property? And does Yeah. it harm my right to freedom? Those are Yeah. the questions. Can we talk of an example when it comes to, let's say, these things like human trafficking? For example, when the grooming gangs in London got discovered, right? People normally were protesting. It's the government that told them you cannot protest against this. The government got involved. The normal community was protesting against it. Yes. Right. So you see the fallacy of the government getting involved in a thing that most people don't like. Good point. The yes. government is incentivizing the grooming gangs by telling you not to protest against them. The government is putting you in jail in the name of whatever. You can't say this, you can't say that, and you can't protest for your own community. You see where we're getting at. Like, if the government gets involved, it's not necessarily a good idea when it comes to your community's interests. This is an interesting criticism. He's saying that he agrees mostly, but he's saying that unless we become a country primarily for Hindus, just like Israel is for Jews, we can't have libertarians. What policy of Israel government do you think libertarians disagree with? There are free laws for. I mean, there's right to freedom for even Muslims in Israel. So, what is the disagreement really? Okay, now they have remembered the name of the football club, Leicester City. Leicester City. हाँ ये Correct. So that's Vardy's team. Yeah, that's what I thought. Yeah. Leicester. Okay. Wait. Yeah. Biggest block to libertarianism is that people have to be informed and active in their communities. Different to implement in India, where people are used to Mai Baap Sarkar. How will LPI tackle that? देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि माई बाप सरकार वाली, वो तो ऑब्वियसली सिचुएशन प्रॉब्लम वो मतलब वो तो सिचुएशन है. प्रॉब्लम ये है कि माई बाप सरकार है वो असली में चोर है. वो दिखाती है कि मैं माई बाप हूं, मगर वो असली में चोर है. वो अपने पे अपना कट कौन माँ बाप पहले अपना कट लेते हैं, उसके बाद बच्चे को कुछ देते हैं. तो वो माई बाप सरकार है नहीं असली में. दूसरी बात, हमारे जो हमारे जो पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक मैं पॉलिसी प्रोग्राम बात करता हूँ, वो है इनडायरेक्ट स्कीम्स को उड़ाओ, सारा फंडिंग डायरेक्ट स्कीम में शिफ्ट करो. अभी मेरे को पहले ही पता था कि ये डायरेक्ट जो अभी लाडली बहना वगैरह योजना टाइप है, वो पॉपुलर होने वाली थी, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है कि मैं वोट डालने जा लूंगा, मेरे साथ और लोग वोट डालेंगे और हमें 2,500 पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि महीने के लगभग अपना 15,000, साल के लगभग 15,000 के आसपास हो गया. अब वेरिंग की भी आप किस रीजन में हो. तो कुल मिला के बात ये है कि वो बनी है ना, आपकी डायरेक्ट कैलकुलेशन बनी है. आपने एक बार बटन दबाया तो मेरे को इतने पैसा आया, तो ये डायरेक्टली चल रहा है. मगर आप इनडायरेक्ट स्कीम में नहीं कर सकते. आप नरेगा में डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कि अच्छा मैं एक बार वोट करने जाऊंगा तो मेरे को बदले में इतना मिलेगा. तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होनी थी. मगर प्रॉब्लम ये कि इससे एक्चुअली ना कुछ मिलता नहीं है. 2,500 आपका, हाँ मतलब 10,000 की अगर आपकी मंथली इनकम है, उसमें 25% का इंक्रीमेंट तो है, मगर परचेजिंग पावर ओवरऑल में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सोल्यूशन ये है कि जो कि सिर्फ मॉडर्न टाइम में पॉसिबल हो सकता था, हिस्ट्री में कभी भी पॉसिबल नहीं था, कि वन क्लिक ऑफ अ बटन पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ अकाउंट्स में साइमल्टेनियसली पैसा ट्रांसफर किया जा सके, बिल्कुल क्लीन प्रोसेस में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट. जो वो पुरानी स्टेटमेंट थी ना कि हम 10 रुपए रिलीज करते हैं और 1 रुपए, 100 रुपए रिलीज करते हैं, 1 रुपए जाता है, ऐसा कुछ जो कैलकुलेशन निकाली जो भी थी. तो अब वैसा नहीं है. अब डायरेक्टली आप जितना रिलीज करते हो उतना ही जाता है. तो पॉइंट ये है कि हम जो स्कीम पे काम कर रहे हैं उसमें ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, विमेन से स्टार्ट करेंगे. गवर्नमेंट क्या करेगी, हर वुमेन के नाम पे एफडी कराएगी बैंक्स में, और 1 लाख रुपए के आसपास की. मान लो एग्जांपल लेते हैं बिहार रीजन की. बिहार का कॉमन टोटल बजट 40,000 करोड़ के आसपास है. तो इतने में हर वुमेन के लिए इंडिविजुअली लगभग 1 लाख रुपए का वो हो सकता है. एडल्ट वुमेन का, वो नहीं माइनस का नहीं, एडल्ट वुमेन का 1 लाख रुपए का एफडी कराई जा सकती है, जिसके अगेंस्ट वो लोन ले सकती हैं
और लोन से अगर उनको जो भी अपना एक्सपेंसेस वगैरह निकालने हैं वो निकाल सकती हैं, उसके बाद उसको रीपे कर सकती हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है, वो वाली एस्पेक्ट बिल्कुल सही है, मगर उसको एक करने के तरीके हैं कि टैक्स पेयर की लाइबिलिटी ना बने और गवर्नमेंट का जो स्केल वाली जो बात आती है वो भी एक्चुअली कराई जा सके। तो इस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, मगर इस सिस्टम में पॉलिटिशियन को कोई कट नहीं मिलने वाला। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट पॉलिटिशियन नहीं करने वाले, ये सिर्फ लिबर्टेरियन ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है। जो तुमने फाइनेंशियल एक्सक्लूजन किया है फ्री मार्केट के ना होने की वजह से, हमें उसको कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी, मगर हम उस तरीके से करेंगे कि टैक्स पेयर पे बर्डन ना आए, और उसके लिए अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। Here's some interesting questions. If you come to power, are you going to go all in with guns blazing in a one term, or will you play the long game to survive for a second chance, knowing that Indian voters love their socialism more than economic freedom? हमारी स्ट्रेटजी में वोटर लॉटरी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम सिस्टम इस हिसाब से बिल्ड कर रहे हैं कि इलेक्शन आए या जाएं, फ्री मार्केट प्रोग्रेस करे। उसी वजह से, उसी के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, रियल फ्री मार्केट। उसका बेसिक आइडिया ये है, जैसे सिविक प्रॉब्लम्स होगी, जैसे क्लीनलीनेस होगी, रोड रिपेयर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो इन सारों के लिए क्लीनलीनेस में जैसे लेकिन हमने पॉडकास्ट पे सारी चीजें कवर करी थी। तो बेसिक आइडिया ये है, जिस भी सिविक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप जाओ, आपको सारे रिसोर्सेज वगैरह मिलेंगे, आपको इन्वेस्टिंग चाहिए, आपको टेक्निकल नो हाउ चाहिए, आपको टीम चाहिए, वो सारा कुछ मिलेगा। तो हम उस प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं। तो बेशक पार्टी इलेक्ट हो या ना हो, आपकी लाइफ जरूर बेटर होगी लिबर्टेरियन पॉलिसीज की वजह से। Yeah. Rishi, I'll take this question. This is a pointless concern, because if their parents decide that their children must learn flat earth and Sharia and then become jobless and no one's hiring them as terrorists even, then what's the point of sending them? Please go ahead, learn what you want. Who knows? People may actually discover everything is flat. We don't know. So go ahead. Chase your theory. This is an interesting question. Your freedom, nobody can question you. You want to prove the earth is oval, go ahead. It's your life. Do what you want. Thoughts on Hindutva and the government is the worst part is the government is actually taking our taxpayers' money and teaching them the same thing that you fear will be taught. That's even worse. If they don't fund madrasas, how many madrasas will even survive? The problem is created by the government in the first place. Yes. So thoughts on Hindutva and Veer Savarkar? Well, Savarkar was a revolutionary in the true sense. Maybe if by some miracle we had the chance to converse with him, he would definitely have come to our wing. Hindutva as a culture, I think it is more of a revival of a civilization asserting itself. तो वो ठीक है। Obviously Hinduism को जो इतने साल अपना, इतने मिलेनिया, 1000 साल तक अपना कंपटीशन झेलना पड़ा है, और फिर अब थोड़ा रिसर्जेंस तो आएगी ऑब्वियसली। तो हिंदुत्व कल्चरल ठीक है, मगर अगर आप उसमें कहते हो कि भाई हम दूसरों को उड़ाना शुरू कर देंगे और हमें तो सिर्फ अपना ही सिस्टम चाहिए, तो उसमें डिसएग्रीमेंट है। Before I'd like you to take this question as well, but I'll answer first. Is Libertarian Party of India aware that your statements on CA really made people like me, sitting in Bangladesh and being persecuted, hurt to the point that we are happy to live under Hindu socialism than live under a libertarian anti-Hindu foreign policy? Milton, you only think you are happy to live under Hindu socialism. You are not really, because most Hindus are living the country and going to non-Hindu countries. It would be probably better for you to live in a Hindu socialist state than in Bangladesh, but it's not the case for most Hindus in India only. So now go ahead, Tushar. नहीं, सीए की किस स्टेटमेंट की बात हुई है? मैंने सीए में ये कहा था कि ये तो मतलब कि हमारे जो हमारी कमिटमेंट्स पहले ही हो चुकी, तो गवर्नमेंट उसको ही आगे एक्सटेंड कर रहा है। तो इसमें क्या किस चीज की बात हो रही है? कि आप ये कह रहे हो कि भाई जो दूसरी माइनॉरिटीज है उनको हम इंडिया में ना आने दें? No, not CA agrees with all minorities of Pakistan and Bangladesh anyway. I guess he's talking about what if any Muslims also want to come here just through CA. I mean, he's not opposed to CA. Listen, in a libertarian मेरे को CA से कोई प्रॉब्लम नहीं है। Right. See, the demand will drive everything. First of all, like the issue that the Bangladeshis are facing right now may not have even existed, because they are needed here for a lot of purposes. Otherwise, why are people hiring them? And who are these people trying to tell them to leave?
They are doing actual jobs here and all of that, and suddenly we are woken up saying, "Oh, we need to round them all up and take them out." Yeah. In a libertarian system, nobody would even consider that, because it's about supply and demand, and if you are in here for the right reasons, you will always be here happily working, just like how Indians are working in the US. You will be working here. I mean, what's the big वही deal? आप इंडिया में कह रहे हो कि बांग्लादेश से लोग नहीं आना चाहिए, मगर आप ये कैसे, फिर आप इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो कि इंडिया के लोग यूएस से जाने चाहिए? Right. So it's the same thing. I mean, like at the end of the day, you are making yourself useful. So why will the government? मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये प्रमोट करें कि उनका अपना खुद का कल्चर चलेगा, वो अपना जो भी करे, आप लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करो, अपना आपकी कैरेक्टर के बेसिस पे आपकी जजमेंट होगी, आपकी ग्रुप आइडेंटिटी जो आपकी वॉलंटरी आइडेंटिटी नहीं है, उसके बेसिस पे आपकी जजमेंट नहीं होगी। आप पैदा इंडियन हुए हो, आप पैदा बांग्लादेशी हुए हो, आप वॉलंटरली नहीं उससे ज्यादा एसोसिएट किया आपने, तो उसके बेसिस पे आपकी जजमेंट नहीं हो सकती। Again, those 4 questions exist for him also. Does it harm anybody? Does it hinder their rights? Does it hinder their right to property? Does it hinder their right to freedom? If the answer is no, people are welcome. What else is there? Now, Goddank thinks libertarians are opposed to this. He has not watched our live streams on libertarianism, but answer it just for fun's sake. What is LPI's stance on freeing Hindu temples and not interfering in Hindu rituals? Absolutely pro freedom, absolutely pro freeing Hindu temples. Yeah. Women, men, everybody, please feel free to go into your place of worship and ask for your right to see your God. Like that's how it is. वो negotiation temple authorities और आपके बीच में है, government का कोई involvement नहीं। Yes. I think that's the most common sense position actually most people would agree with, except some commies randomly here and there who are atheists, by the way, who don't believe in the deity anyway. Okay, he's very opposed to the idea of private arbitration. How much are you ठीक है भाई, आप ही मैच्योर हो, हम तो इमेच्योर, हम तो यूं ही घूम रहे हैं। वो गुजरात वाला बंदा 3 साल से जो कोर्ट चला रहा था, वो तो फिक्शन स्टोरी है। आप ही में सारी मैच्योरिटी है ना? This is the same guy who mentioned, I think, in the comments also that we are immature and stuff like that. So I don't know. मैंने क्या मतलब सुन लो तो पहले मैं क्या voice and talk to us straight off, because these texts don't tell the whole picture about Shastri and what he really wants to know. I feel we need to know Shastri a little better. Where are you from? What do you do for a living? And so we can help you a lot better, because at the end of the day, you think we are immature because we are actually responding only to your texts. We are not able to actually understand where you're coming from. We want to know what you are. Will LPI support banning social media for kids? There is no benefit in giving kids under 16 social media. Milton, my question is, how will you enforce it? I had my YouTube account before it was legal. दूसरी बात, ये जिन चीजों पे बैन लगा हुआ है वो कि किड्स नहीं देख रहे या यूज नहीं कर रहे। Using funded leagues as a solve is a very slippery slope, because you're using external funds to allow disadvantaged groups to survive. So US AID becomes okay then. Funded leagues, किस चीज की funded leagues? It might have been a response to something else we were discussing. I'm going in a chronological order, so there's a problem with that. US aid, disadvantaged groups to survive US aid. और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यूएस एड के बारे में अभी 3-4 दिन पहले ही पता चला है। मेरे को तो पता भी नहीं था ये बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो so basically all the anything that you can remotely think of and consider them anti-India or anti-Hindu in terms of academia, pop culture, NGOs, all of that was being funded by USAID. See, the reason why these USAID and all that are taking precedence is because there's nobody else bringing in money. There are tons of regulations. Everything is stopping everybody else. These guys won't even matter if we open up the market, allow like 100 everybody to invest in the country. What will USAID do? They can't do anything in a decentralized system that is allowing finances from like all over and things like that. There is no common theme that can be really enforced upon any Indian at any time. Right. Do you think that voting age should be increased to 25? Your personal views, not your policy. No, I think I think you get to college, you're allowed to vote. I feel like who here can say, like, look at all your viewers as well. I think most of them are college students. You think they are not smart enough to go there and vote? Go out there and vote. I would say, like, you're smart enough to know what you want.
Yeah. If your solutions to problems with judiciary is private arbitration, then go back to the drawing board, because today most private players are using arbitration before going to court. That's getting us nowhere. What? Oh. No, I don't think that's a good characterization of what's happening. Yeah. There in judiciary, if you go to a court, let's say, and you will see tons of cases on divorces, property disputes and this and that, and people bribing policemen, and Yeah. it all becomes this whole who has more corruption on their side kind of a weapons Yes. show in courts. So private so the judiciary itself is perhaps the most inefficient arm of government, for a reason, because there is no accountability for the judiciary's actions. And there is no like in America they have elected judges, but here your judges can get away by saying all kind of Makarande Kadju is also a judge, was a judge here. So Yeah. you can actually, with the community dealing with things and with more of a private arbitration among various parties in disputes, you can actually stop going to the state for most of the things. That's where the problem lies. Whenever you involve state actors, all they do is take your money and screw you over in the long run. So that's Yeah. the main thing. Maybe that's not like a bullet, like a silver bullet to solve every problem, but certainly the courts are private arbitration is not the first thing that happens on a like at the basic level. If you're Yeah. talking about businessmen and all, that's a different thing, I don't know. But at the common level, most people have to go to courts, and they get screwed over by police and the judicial system. Yeah. And lawyers, not to mention. Lawyers make things way worse than things are supposed to be. Yeah. Barbaric Smriti, एक मिनट, मेरे को ये मैं मेरे वैसे अगर आप इनके बारे में आपको पता हो, ये गुड फेथ एक्टर हैं? yes, yes. पूछ रहे हैं या कुछ बायस है इनका? Yeah. No. He mostly agrees with us. On just some issues, he has disagreements. What will you do if a community uses their liberty to choose communism? That's what's happening anyway right now. So unless you say that libertarians will have to prevent communists from running elections, that's a different question. That's an election game. करो कम्युनिज्म करो, फिर लोग छोड़ के चले जाएंगे दूसरी उसमें. Yeah, that's what's happening anyway. Yeah, what's new with that? Okay. What's the difference with the current situation? Private player, yeah, we just discussed this. God thanks to we took. LPI believes decentralized systems, Kejriwal proposed decentralized councils. What's the difference then? Both are anarchist systems. Constitution. Could you elaborate a little? उसका मतलब ये थोड़ा ना हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये थोड़ा ना हो जाएगा कि वो अपना शरिया कोर्ट चलाना शुरू कर देंगे या अपना कोई आर्बिट्ररी कोर्ट चलाना शुरू कर देंगे. उसका मतलब ये है कि आप लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड को तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा. बस वो बात है कि आप डिसीजन मेकिंग साइकिल्स फास्टर कर सकते हो अपना. What is LPI's stand on mass conversions of tribals and demographic shift? Do you envision free market of religions? It already exists. One group is richer to do it. Yeah. Right. Land value tax. Do you support land value tax? इस पे डिबेट है. इसमें कुछ जॉर्जिस्ट हैं ग्रुप में जो कहते हैं कि लैंड वैल्यू टैक्स होना चाहिए, मगर वो कुल मिला के बात ये है कि वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को फंड कैसे किया जाए. और मेरे ख्याल से अब मॉडर्न टेक से फंड रेजिंग काफी ज्यादा इजीियर है. तो ये लैंड वैल्यू, बाकी वैसे अगर देखा जाए तो लैंड वैल्यू टैक्स एक जो मेरे को सेंस बनती है, एक चीज में जो सेंस बनती है वो है रेंट सीकिंग बिजनेसेस को, रेंट सीकिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना. मगर फिर भी मतलब टैक्स की तो फिर कुछ सेंस, मतलब कुछ वर्क अराउंड करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट सीकिंग डिस्ट्रॉय कर देती है एक सिटी को ना. उस पे कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि आप रेंट सीकिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हो. Could you explain what is a land value tax a little for the lay people? लैंड वैल्यू बेसिक आइडिया ये है कि आपका उस पे आपको लैंड को पहले वो माना जाता है कि इसके जॉर्जिस्ट का बेसिक आइडिया, जॉर्जिस्ट को
पता नहीं ओवर पीरियड ऑफ टाइम सोशलिस्ट और लिबर्टेरियन दोनों ने अप्रोप्रिएट कर लिया जॉर्नलिज्म को। तो बेसिक आइडिया ये है कि सिर्फ इंडिविजुअल खुद वो है खुद प्रॉपर इंडिविजुअल खुद वो है सिर्फ मतलब लेबर असली वैल्यूएबल चीज है, लैंड नहीं है। और लैंड वो करती है दूसरे को वो करती है मतलब वो रोकती है उसमें आने से मतलब कि फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर को रोकती है लैंड Right. बेसिकली। तो आपको लैंड को वो कर देना चाहिए, कॉमन यूज कर देना चाहिए ताकि अच्छा। अपना वो हो सके। तो उसको उसका लैंड को कंसोलिडेशन करने का मतलब कि एक बंदा ही मैं बड़ी लैंड होल्डिंग करके उसका लेबर की मूवमेंट को बेसिकली रोक सके। मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आई है सारे उससे उसको ही बता रहा हूँ। तो बेसिक आइडिया यही है कि अपना उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मतलब Right. मूवमेंट ऑफ लेबर को कैसे ईजन अप किया जाए। असली Right. इकोनॉमिक वैल्यू लेबर में है। Yeah. Will LPI also decentralize right-wing raw and IB? It's pretty decentralized in a way. It Yeah. actually runs with feeds from all over the country. Would you do something else with raw and IB? फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी में शॉर्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं। Right. Boishalidi, they don't believe in funding or taxing the places of worship anyway. So this question doesn't apply to them. और आपके ऊपर There's भी yeah. Do you think if we increase our fiscal deficit to 5%, which is 4.4% right now, and invest heavily in manufacturing sector and industrialize heavily, is it a good idea to implement? no? Do what कोई the फर्क नहीं पड़ता उससे। आप बेशक इसको 10% पे ले जाओ, 50% पे ले जाओ, 100% पे ले जाओ, हाँ। until unless आप डीरेगुलेट नहीं करोगे, बाबूडम को खत्म नहीं करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, so open carry or not, or concealed carry? I guess that's the question. Should the guns be only at home? होम में करोगे क्या जब बाहर जरूरत होती है? Right. This is another channel by our friends. We are going to debate libertarian policies from Indic perspective on our channel. We would like to continue the discussion. We support you guys. Let's go. They will Now I'm contact ready. We love that. Anytime you want. Boishalidi, they won't close the madrasas, they'll defund the madrasas. Please define anarchism. Well, एनार्किज्म जैसा कि वर्ड का अगर सेपरेट करें तो एनार्की, एब्सेंस ऑफ एनी हायरार्की। Which can't happen. I guess from the state side, but your stance is more towards anarcho-capitalism than libertarianism. Am I right? हमारा स्टांस है कि इंडिविजुअल फ्रीडम की डायरेक्शन में जाए। वो अलग अलग ज्योग्राफीज के ऊपर है कि वो एनार्को कैपिटलिज्म की तरफ जाती है, मिनार्किज्म की तरफ जाती है। we really cannot put ourselves in those brackets like that. Our thing is individual freedom. That's about it. Do you think? I think Milton Friedman has a question on alimony. I think that's an important take because of the Atul Okay. Subhash case and all that stuff. Yeah. I was wondering, We'll take this is my idea. If we have contracts, right, prenuptial contracts, which are still not allowed by the Indian state, I think, then that solves this alimony issue to a great extent. But prenuptial contracts will be more applicable under a libertarian system than what is currently being done by the state, which is involved Right. in the very marital process from top to bottom. See, again, So- the system was corrupt in these cases. No, like you Exactly. have to take that into consideration. Like if this was a straightforward system, I don't think any Atul wouldn't have wanted to do any of that stuff to himself, because the system would have been fair to him as well. It should be decided Yeah. on the character of the individual rather than these sort of things. You know, for example, even if you say prenuptial agreement and all of that, it takes two people to decide whether to sign it or not, and one person can be forced to sign it. So you know, at the end of the day, it is still going to introduce more problems than it takes away. So we need to realize that our system is corrupt. First, remove that corruption. That is the main aspect of things, and the things that we lined out earlier for the judiciary is what will remove these things. Right. Do you think sortition should replace elections, especially for local elections?
I guess selection instead of elections. Sortition, meaning of the sortition. Sorting people into into positions. How? Oh, I'm not sure. Okay, let me just go through some things that I can respond to in one sentence. He's saying we don't want a woke libertarian party like the Dems. Similton, their policies work in a way that it doesn't even matter if they are personally woke or not. Labor belongs to the workers, capital to the capitalists. Okay, this is not a question. How do you counter rogue agents in a decentralized organization? By following the law. External and internal security is a public good. No one will contribute to it out of the good of their heart, as Kautilya said, and it will lead to Jungle Raj, Matsya Nyaya. Okay, then what happened in the times of Chanakya? Was there centralized soldiers going around protecting villages? It was not. Okay, Also, let's say yeah, go on. During the China war, plenty people were contributing, and also during World War II के time, यूएसए ने वॉर बॉन्ड्स रिलीज करी थी जो कि पब्लिक ही खरीद रही थी. आपने कैप्टन अमेरिका देखी होगी तो आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका खुद वॉर बॉन्ड्स प्रमोट कर रहा था. Yeah. How will you deal with secessionist state? They are not saying that let people go around promoting those ideas. Law will come down on them. How would treason work in a decentralized system? If you do bad things against the state or the people, you are in jail. If you say you want to do those things, or if you say things that are considered treasonous, you are okay. Are you okay with monopoly formation, which will happen since richer people will compound faster? But richer people, with the moment you say people, that means it's not a monopoly. You can either have freedom or equality, never both. We're not bothered about equality. A country which doesn't have a monopoly on violence is not a country, but a dharamshala. Okay. Would you take this question? Would you like to take this question? Similar question, I guess. Doesn't have a monopoly on violence. It's not a country. A country which doesn't आपकी डेफिनेशन में नहीं होगी. Jamaat is infiltrated the system. Okay, if the system is itself decentralized, then how are the Jamaat is going to infiltrate it? That's the philosophy. This is the secessionists only jump in India to get special privileges. नहीं यार एक मिनट आप खुद सोचिए देखो कि 1000-year rule था उनका 1000-year rule वो फिर भी कंट्री की डेमोग्राफी चेंज नहीं कर पाए. Yeah. Because there was no centralized. No, Didi, there was no centralized system. ऐसा नहीं है. Because there was no centralized system, therefore we survived. But there was no centralized state, इसलिए invasions हुए. अभी centralized एक state, एक country नाम का एक चीज है. उसको तो लिबर्टेरियन पार्टी बंद नहीं करना चाह रहा है. This is not anarcho-capitalism we are discussing. We're not talking about have 50 small provinces now. Let's see. Does the Libertarian Party of India support bans on platforms like Libertarian Party of India? Absolutely not. Caste discrimination defined. That's a discussion with themselves. Okay. What is your opinion on shrinkflation? Is the practice of reducing the quantity or size of consumer goods while maintaining sticker prices? This is getting too much out of control. Competition. आप बिजनेसेस रन करके देखो आपको पता चलेगा कि आप कंज्यूमर साइकोलॉजी किस तरीके से ऑपरेट करती है. Yeah, think about जहाँ तक इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन की बात है जहाँ तक तो वो गवर्नमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम है. सेंट्रल बैंक स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंक क्रिएटेड. अभी ये धक्के से ही इंटरेस्ट रेट्स गिरा के अपना लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है उसको लेके कि कंट्री लिक्विडिटी की जरूरत है या नहीं है. मेरा पॉइंट ये है कि तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो. तुम हमेशा या तो लेट हो गए या तुम जल्दी हो गए. तुम राइट टाइम पे तो कभी होने नहीं वाले. मार्केट्स को ऑपरेट करने दो. Right. Rishi, this is a good question that I'll answer. How did decentralization work out for Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Myanmar? Yeah, that's the country problem. We didn't have a country political centralization. I would say decentralization may have worked for Afghanistan and Pakistan, but individual freedom did not. Individual freedom. No, he's being sarcastic here. He's saying that Afghanistan, Pakistan, Bangladesh fell. No, because India was not a centralized society. But we don't have that problem anymore. It's a new world, so we are not discussing that anymore. We are not opposing that even. We're not saying kill the Indian state. Nationalists will worry about China buying ports in Sri Lanka, Belt Road, etc. But libertarian in principle won't. Today's age is of economic warfare. How to reconcile libertarianism with it?
We will win with economic warfare. This is going to be the strength of the Yes, Libertarian Party. there's The going to be more Libertarian wealth Party creation. Simple. is now Simple सी बात बताओ. going to use every individual's power, not just some community, some group, one industry in BR or one industry. Everybody will be mobilized in India, and we will win the economic war easily. Yeah. Again, Rishi, this is a state-side idea that we are not opposed to. Have a country called India. We are not opposing that. But the religion of Hinduism is pretty decentralized anyway, and I don't think you can be a religious reformer big enough to consolidate and make one uniform Hindu religion. That's not going to work, which you're trying to counter. Judiciary bugs me. It affects me individually, but LPI solutions will make things worse. Judiciary and justice are not high, extremely far off concept. Without justice, a neighborhood cannot sustain itself, but decentralization does not really harm that. Let's मैं आपको एक see. स्टोरी सुनाता हूँ अभी. मैं स्टोरी सुनाता हूँ एक. अभी क्या हुआ, अभी कोई है, उसके साथ मैरिज में फ्रॉड हुआ, तो उसने उसका वेट नहीं किया कि भाई मैं कोर्ट में करूंगा, ये करूंगी, और वो उसके बाद फिर अपना पूरा लीगल एक्शन होगा, उसके बाद फिर मेरे को वो आएगा. वो सीधा खा पंचायत में गए, उनका रिजल्ट आया अपना, उसके बाद फिर बस खत्म, सेटल हो गया मामला. खा पंचायत भी तो उसमें इंक्लूड करी जाएगी एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म में. Yeah, and Mr. Sociologist is pointing out in the private chats that with regards to partition, it cannot be avoided by centralization, as Congress found out. If anything, Gopal Patha worked in a decentralized manner, and he was bypassing private police anyway. Not private police, tax-funded police anyway. Okay. It's like we have to convince ourselves to vote for them. Of course, you have to convince yourself to vote for them. Did Narendra Modi say one thing one fine morning and you got convinced immediately? As a political party, they aren't convincing us to vote. अभी वोटिंग का टाइम नहीं आया है, अभी आइडियोलॉजी का टाइम है. वोटिंग के लिए आप जब हमारे पॉलिसी प्रपोजल सुनोगे तब पता चलेगा. अभी पॉलिसी प्रपोजल के बारे में ज्यादा मेजर डिस्कशन हुई नहीं है. Yeah. Do you guys have any national security defense experience? Okay, people with experience have lost these wars anyway many times. Experience is not the point. Why are insurance denial rates in capitalist USA far higher than in socialist India? What? You say capitalist heavy. But why are insurances getting denied to Americans? आप USA is इंश्योरेंस कंपनी को compete इंश्योरेंस मार्केट में इतनी ज्यादा इंटरवेंशन है ना वहाँ पे, उनको ये कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतने ज्यादा है, तो उनको ऑटोमेटिकली फ्री मार्केट उस तरीके से है कि बिजनेस अपने इंश्योरेंस कंपनीज वो खुद ऑपरेट कर सकती हैं. मगर फ्री मार्केट उस तरीके से नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और रेगुलेशन इतनी ज्यादा हो गई हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ गया है. Is a register like go on. There was a movie called Rainmaker where they showed how insurance companies work in the US, and if there is a contract being declared null and void, you can go to a court. But here what happens is that whole thing is bypassed. See, it's not about whether they pay you because you claimed something. It's about whether they are contractually obligated and they are going to pay out, yes or no. So that is the main aspect of what we're trying to push. And again, like I think Tushar said, that we cannot use USA as an example for every, because USA is barely capitalist, as we have found out on many occasions. Yes. Is the register like a social credit system like Chinese Communist Party, or is it different? Could LPI elaborate on this? नहीं, ये उस तरीके से नहीं है. ये बस उस तरीके से है कि जैसे आपका विकिपीडिया होगा बेसिकली, या फिर आपका जैसे ट्रू कॉलर में आपका रेटिंग नहीं आ जाती कि ये बंदा फ्रॉड है या नहीं, इसको रिपोर्ट किया है नहीं. ट्रू कॉलर के तरीके से है कि आप जो सामने पार्टी आ रही है उसका एक सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री निकल आएगी कि दूसरे लोगों ने इसको क्या रेटिंग दी है और इसके बारे में क्या बोला है. ये स्टेट वाला नहीं है, ये वो वाला है, एनोनिमस वाला. Heir of Slytherin, they are not going to help you, they are going to take away your obstacles. Then let's see. I mean, the previous question I thought was warranted a little bit of an answer. Okay. Yeah, take it. Right. This one.
No. The previous one where he said that he is from a lower middle class. Will people take their ideas? Or Oh, okay. Yeah, yeah, go ahead. this I want you to know. Like even person like me came from a very small town or whatever it is, but I found it very difficult in this environment because of a lot of different things. But let me tell you, like in the libertarian system, your class, your this, they don't matter at all. Your ability will drive you to greater heights. So don't worry where you're from. Like don't forget where you're from, but wherever you're from, you will be successful. Like Yeah. Also, you know, मैं एक बात और elaborate करना चाहूंगा कि लिबर्टेरियन सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन डीरेगुलेटेड होगी, तो आपकी पहली बात कॉस्ट इससे बिजनेस सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरा, कैपिटल कॉस्ट भी कम होगी अगर आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होगा। कि कौन बिजनेसमैन कहता है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो और Yeah. मगर अभी प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज होती है इंटरवेंशन की वजह से। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है, सही में लुक्रेटिव है, आपका प्रोटोटाइप प्रूव होता है कि भाई हाँ ये सही में रिजल्ट दे सकता है, तो कौन अपने कैपिटल नहीं लगाना चाहेगा। तो जिस तरीके से अभी वेंचर कैपिटल मार्केट ऑपरेट कर रही है, think of it. You have no लिबर्टेरियन मॉडल के अंदर taxes क्या to होगा कि आपको बस इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है कि भाई मेरे को इस ये आइडिया मेरे को प्रॉमिसिंग लगता है, इसमें आप इन्वेस्ट करो। और लिबर्टेरियन सिस्टम में ये भी होगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट बहुत आसान होगी, और कॉन्ट्रैक्ट और आप फ्रॉड्स का भी ट्रैक रख सकते हो कि भाई ये बंदा फ्रॉड तो नहीं, इसकी कोई हिस्ट्री ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। तो इस वजह से आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। लिबर्टेरियनिज्म का प्राइमरी गोल इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमिक फ्रीडम में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडिया को नंबर 1 लाना है, और अर्जेंटीना से बेटर करके दिखाना है। Yeah. This question is to me. One of your supporters just said I shouldn't ask questions and waste your precious time. How will you ensure you don't replace one babudam with another without dealing with chamchagiri? Because we won't have a babudam in a libertarian situation who has the powers to take away your voice. Next question. Let's see. Yeah, this though I took. Will Libertarian Party of India allow me to traction political power? If not, then isn't it a breach to my personal freedom to consolidate power around me and become a dictator by creating an authoritarian party? Did you get the question fully? Political party. I mean, you're free to do what you want. If you want to start a political party, please go ahead and start whatever political party. At the end of the day, you're in the same boat as us and the boat as the other political parties. You still have to get your votes and get things done. But you're creating an authoritarian party. What process are you going to get? Either elected, or are you going to take it by force? What is your prerogative here? All right. I'm not seeing too many questions anymore. USAID questions again. We have discussed that. Let's see. How would LPI make coalitions to win elections with other libertarian-minded parties? I guess. Yes. Last question. Question. Okay, he's saying that I'm an investor in a startup that works in private arbitration. I know LPI's policies are unworkable on private arbitration again. Yeah, he is an investor in a startup. Okay. I mean, like, if he's, what is his current system? I really want to know. Like, is he able to easily run his private company? His idea is that we have to get rid of the collegium system in the judiciary, which will have to be approved by the judiciary itself. Yeah, okay, everything connects back to the judiciary for him. Yeah. Get him on a यार देखो, podcast. आप दो अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हो। आप अगर आप ये बात अब इस तरीके से बात करी जा रही है कि भाई आपके बिजनेस को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, और दूसरी बात ये, हमारा पॉइंट यही तो है कि प्राइवेट आर्बिट्रेशन को ईज अप किया जाए। अभी प्राइवेट आर्बिट्रेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट मोनोपोली के कंपटीशन में है। हम ये तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईज अप किया जाए कि भाई हम प्राइवेट आर्बिट्रेशन ऑपरेट कर सके और जो उसके ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाया जा सके। तो आपका स्टार्टअप एक उसमें एनवायरनमेंट में है जो सूटेबल ही नहीं है उसके लिए। अब सिंपल एग्जांपल है कि हमारे एक वो है, फ्रेंड है, फौजी नाम से है, वो उसमें ट्विटर पे है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया इमिग्रेट कर रहे हैं और गुजरात में वो गए ऑफिस में। तो उनका उनसे क्वेश्चन ये था कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कौन आता है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो उन्होंने सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से बंदा इंडिया इमिग्रेट कर सके। तो पॉइंट ये है कि अभी सिस्टम डिजाइन ही नहीं है उस हिसाब से। तो आप तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें सिस्टम डिजाइन उस हिसाब से करने दो कि आप फंक्शन कर सको। अभी सिस्टम उसी डिजाइन ही नहीं उस हिसाब से।
Yeah, आप this ये is बात a नहीं, nice आप question. Yeah, go on. मेरे को सिंपल बात बताओ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि प्राइवेट आर्बिट्रेशन मतलब कि दो लोग बैठ के अपने डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर सकते और बीच में एक इंटरमीडिएटरी है, आप इस फर्स्ट प्रिंसिपल पे डिसएग्री कर रहे हो? This is a nice question. How will Libertarian Party of India deal with issues like the Gyanvapi mosque situation or the Gyanvapi Mandir situation? Both sides violently defend their positions unless the state monopolizes violence. How to solve these problems without resorting to civil war? Nice question. ज्ञानवापी ऑब्वियसली फेक इशू क्रिएट किया हुआ है, ऑब्वियसली वो टेम्पल है. Yeah. So, but let's say hypothetically you are in power right now. What would you do to solve the situation? Just hand it over to the Hindu side and create a temple out of it, and let them create a temple out of it, right? हम नहीं करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि वो Right. अपना केस बिल्कुल क्लियरली प्रेजेंट कर सकें और Nice. अनडिनाइबल एविडेंस हो कि भाई उनका क्लेम सही है, सब लोगों को Right. दिखता है, मगर जुडिशियल मगर उसके इंटरवेंशन की वजह से उसकी रियलिटी डिस्टॉर्ट करी जा रही है, जैसे कि राम मंदिर के टाइम में रियलिटी डिस्टॉर्ट हुई थी. वो ऑब्वियसली उसके नीचे टेम्पल था, उसके बावजूद उसको फेक क्लेम किए और वो जो के मोहम्मदी थे शायद, Yeah, क्या मोहम्मद. जो ए सही वाले थे, वो बार बार बताते Yeah. बताते थक गए कि भाई इसके नीचे एक्चुअली मंदिर है. Yeah. तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ये, और उसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही ट्रीट किया था. ये भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और ऑब्वियसली है कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है. और दूसरी बात ये कि जो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये मॉस्क है, तो आप अपने ही कोर्ट सोर्सेज को रेफर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये मॉस्क का क्राइटेरिया मीट करती है. Do you think as Hindus get richer, we can compete better with the missionaries in the free market of ideas? Is that a good pro-Hindutva argument to promote capitalism? Yes, Rishabh, that's exactly what I agree with. That is the entire point of Hindutva 2.0. Let's see if any questions remain. We are at 2 hours 30 minutes. There are not many questions. Okay, we'll do these things once a month anyway. Then let's end it here. If it's more than 2 hours 30 minutes, not many people are going to watch it later on anyway. So thanks a lot for joining, guys. Anup and Tushar. We'll keep doing this from time to time, and be ready for repeated questions, because you see, like what you answered right now, that's something probably a lot of your critics did not are not going to listen to this, and they are going to ask the same question again a month later. So this is going to go on. So, and thanks a lot for the great questions, guys. Is there anybody who spoke with arguments that not arguments, with something that's agreeing to what we said, or is everybody? Yeah, lots of people. Oh, really? Lots of people. And you see, I am discussing libertarianism. I am discussing libertarianism all the time, right? And they are agreeing with me. They are just not getting those vibes from you. It's a vibe issue. They are suspicious. That's all. मेरे को भी गिटार रखने पड़ेंगे क्या पीछे? रुको एक मिनट रुको. Next time we will wear like all those garlands. I'm sure. No. Most people, most of our viewers are convinced of most libertarian arguments. That's the fun part. Right. मैं बता रहा हूँ, सिंपल चीज ये है कि आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो. अगर आपको लग रहा है कि इस चीज में डेंजर है, तो उस चीज में लिबर्टेरियनिज्म इन्वॉल्व नहीं है. आप बस बाबूडम पे फोकस करो और उसके लिबर्टेरियनिज्म अगेंस्ट है. बाबूडम, टैक्सेस, रेगुलेशन, बस ये 3-4 चीजें. एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इमिग्रेंट, बॉर्डर वगैरह, वो सारी बाद में प्रायोरिटी है. पहले अपनी फ्रीडम तो इंश्योर करो, बाद में देखेंगे आगे का. और हाँ, एक मिनट अनाउंसमेंट थोड़ा. डिबेट्स हम होस्ट करने, अगर मैं एक अनाउंसमेंट कर सकूं तो. या प्लीज. अनूप सर के पॉडकास्ट पे डिबेट्स होंगी. एक टॉपिक पकड़ा जाएगा और उस पे फॉर और अगेंस्ट दोनों साइड प्रेजेंट करी जाएंगी. हमने कॉम्युनिस्ट या आप कमेंट्स में से जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और एनोनिमसली भी कर सकते हैं, मगर आपको आर्गुमेंट्स उस तरीके से वर्बली प्रेजेंट करनी पड़ेगी. हम थोड़ा उसको शो टाइप बना रहे हैं. और दूसरी है कि आपसे पूछना था कि आप अनूप सर के पॉडकास्ट पे कब आ रहे हो. हम थोड़ा और जानना चाहते थे थोड़ा बंगाल एनवायरनमेंट के बारे में. Yeah, and then host these debates with the Hindutvadis who are not convinced of libertarianism anyway, but think Hindutva will work better under not libertarianism. So that will be great as well. Everyone is invited. Everyone is invited. और एक मतलब सिविल तरीके से डिबेट होगी और डिस्कस होगा कि मतलब एंड में कंक्लूजन होगा और विनर और लूजर डिसाइड होगा. ऐसा नहीं है कि हर बार हम ही जीतेंगे, वी विल स्टैक द डेक, ऐसा कुछ नहीं होगा.
फेयर, मतलब हमें भी चांस मिले कि हम आइडियाज किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि ऑडियंस बेटर कन्विंस हो सके, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारे वो है कि प्रिंसिपल तो कंफर्म, मगर हम थोड़ा जो वो है ना वाइब्स वाली जो प्रॉब्लम है वो मोर कन्वर्सेशन से ही सॉल्व होगी, तो उसी के लिए सबको इनविटेशन है। और अनूप सर, आपने पर्सनैलिटी से तो आपने जज कर ही लिया होगा कि ये बायस्ड नहीं है। It's kind of what we want to do is, it's kind of a good natured event. Let's not like these politicians yelling and just everybody just relax, like we're all Indians here, we are just trying to have a great discussion on different things, and that is what it is like. Have a change of mindset, because we are not out here to get you, we are not going to get into power like tomorrow and like destroy your lives or anything like that. So you can just relax and we'll have a great debate. Bring your best personalities over and go to Anup Zombie podcast, okay? ANOOP Zombie podcast, and they are going to host these debates. Ashkajam, they already have a manifesto. If you can send me the manifesto as a PDF, and we'll go through that manifesto with a fine-tooth comb, and people will have a better understanding of your policies. And let's do this again next month. So that's it then. Thanks for joining, guys. Thanks for the nice questions. Thanks for the repeated questions as well. Thanks, Tushar. Thanks, Anup. Good night, guys. Good night, guys. Good night. Bye-bye. যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।